Hello, Dhanush. Yeah, hi, good evening. Good evening. How are you? Yes, fine. I just put it in the chat that, in monsoon, IIT campus becomes that much charming because of its wooded nature and hills and then the waterfall. And, it's one of the best times to visit Powai. And Yeah, we are live. We are live. Right. And open a video, please. You can, yeah, please. Okay. We are already live. Okay. Okay, good. Vijay has opened from two devices, I think. Vijay, good evening to you. Good evening, sir. Yeah, I see two Vijays. Maybe have you opened from two devices? No. I'm only one. Somebody else is there. Oh, some other Vijay, namesake, same as you. Okay. All right. Vijay is not reserved only for your young students. Yeah. Right. Vijay is a very popular and famous name. Right. So. Yeah. Yeah. Sandeep is there. Sandeep can come and you can talk with Sandeep. I see him. Yeah, I am, sir. Yeah. Good evening. Good evening, Sandeep. I have not met you actually. So maybe for 30 seconds, if you can put your video on. I think you are at Dapoli, right? Yes, sir. Yeah. Okay. Yeah. Right. Actually, I met when you have come to ASPI, long back. Okay. There I was an employee at that time. Okay. So, Okay. And I also come to Sitara also 2-3 times. Okay. Okay. Somehow I missed. I wasn't here last year. I went to AIT for 6 months. And Dr. Syed keeps telling about you. So we have to meet sometime at a mutually convenient time. Yes, sir. You may be coming to Dapoli also, no? You have one collaborative project with Farm Power Machinery. Dr. Shahare. Yeah. Right. Yeah. So Can you come now? I missed that opportunity to meet you. Probably I may not be knowing that, or I may not be here in Dapoli. That's why. Okay. Maybe our Industrial Design Center has a project on farm machinery with the Farm Machinery Department of Dapoli University. Yes, sir. Oh, yeah. But surely You can ask others also to come on video. You can chat with them, meet them all. yes. Gorantiwar is just now joined. Okay, Dr. Gorantiwar, you can please put on your video. He's just now joined. Dr. Mukund and Dr. Sachin also, maybe for a minute, if you can put on your videos. I'm going to myself put on. Yeah, I see now Dr. Sunil there. Yes. Hello, all of you. Right, Dr. Mukund, good evening. Yeah, good evening. Good evening to all. Right. Dr. Sachin has also joined or not yet? I think he's joining. He's joining. Okay. राहुल रसाळ शेतकरी जॉईन झालेले आहेत. राहुल रसाळ, तुमचा व्हिडिओ ऑन ठेवता येईल का? थोडा वेळ बघा. त्यांनी ओळख पण केली तरी चालेल. राहुल, थोडीशी ओळख करून द्या तुमची हिंदीमध्ये. सर, मैं राहुल अमृता रसाल at post Nigos till Parner district Ahmednagar. I am a young farmer. My grapes plot is 20 acres, pomegranate 20 acres, or vegetable 10 acres. Or my global gap register grapes, pomegranate, APEDA registration, certification, or ANARNet registration or GrapeNet registration. मैं ऑलरेडी रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कर रहा हूँ.
in 15 years. Or my Europe, UK, Netherlands, German, China, और सऊदी अरेबिया इज ग्रेप्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, और पोमोग्रेनेट भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कर रहा हूँ। और मैं कुछ मेरे पास साहिवाल काऊ है, 10 साहिवाल काऊ, और मैं उसका काऊ डंग से मैं डाइजेस्टर में डाल के उसमें एनारोबिक डाइजेस्टिंग और एरोबिक डाइजेस्टिंग। चालेल चालेल चालेल, थँक्यू राहुल. आपण आपल्या प्रेझेंटेशन मध्ये सांगू. हाँ डॉक्टर सुनील, अपने तीनों जो फार्मर्स है, मतलब राहुल रसाल और रविंद्र निकम और संदीप घोले, तीनों हिंदी में बात करेंगे कि कुछ मराठी में बात करेंगे? हिंदी मराठी मिक्स. ओके 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 ओके, बढ़िया बढ़िया. जस्ट नाउ आपने इनको सुना है, राहुल रसाल को. मेरे ख्याल से उसी इसमें हो जाएगा उनका भी प्रेजेंटेशन. बढ़िया बढ़िया, मतलब जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल हो. राहुल रसाल, रविंद्र निकम और संदीप घोले, आप उनको नरेन, डॉक्टर पीजी पाटिल, honorable vice chancellor has joined. Yeah. Okay. So we still have Dr. Syed about 4 to 5 minutes. Maybe we can wait for 4-5 minutes and then formally welcome chief guest. Yes. Let us wait. Informally, Dr. Patil, welcome to you. We are still admitting the participants. Slowly सब लोग join कर रहे हैं because Dr. Syed, you may know that this is second day of Ganesha, and then a lot of people have Ganesha in their own houses. So people are taking their time to join. So somebody has raised the hand, Yogesh Pol. That's okay. By mistake also they could have. Yeah, Dr. Ravindra Nikam. Yeah, by mistakenly I did this, sir. Sorry, sir. No problem. No, I can remove it. Don't worry about it. Yeah. And Dr. Syed, normally you mute all the participants, right? And those. No, yeah. When they join, they are muted. They have to unmute. Okay. When they're joining, but everybody can unmute themselves as well as video. So problem is not there. Okay. Yeah. रवींद्र निकम साहेब सुद्धा जॉईन झालेले आहेत. त्यांना 1 मिनिटासाठी, अर्ध्या मिनिटासाठी व्हिडिओ ऑन ठेवता आला. त्यांनी ठेवला होता व्हिडिओ. निकम साहेब, तुमचा व्हिडिओ ऑन ठेवता का आणि एक जस्ट हॅलो म्हणा सगळ्यांना. माइक ऑन करता का? Yes, I think we can see Dr. Nikam now. He has to unmute. Dr. Nikam, तुम्हाला unmute करायला हवं. Unmute करायला पाहिजे. निकम साहेब, माइक तुमचा ऑन करा, अनम्यूट करा. Dr. Syed, you have an idea whether Professor Singh and Dr. Indramani will be there this evening? Professor Singh has already joined. Oh, Professor Singh has already joined. Okay, good. And Dr. Mayande has joined. We sent invitation. Hello, Ambrish. Hello. Ramesh has joined. Hello, Sayedji. I am here. Yes. Hello. Okay. Thank you. Sir, आवाज येतोय? हाँ, आवाज येतोय. ओके. संदीप घोले साहेब, तुम्ही पण तुमचा एक व्हिडिओ थोडा वेळ ऑन करा ना. तिसरी ते पण जॉईन झालेले आहेत. ओके.
So all the three farmers joined. Actually, in fact, two they also checked their video. Okay. Okay. Good. Good. घोले साहेब तुमचा व्हिडिओ एक मिनिट किंवा अर्धा मिनिट ऑन करा. डॉक्टर सचिन आले नाहीत का अजून? Sir, I am here. Actually, He's there. Okay. Good. 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 Good evening. Good evening. good evening, sir. Yeah. Yeah. So The issue is that my name is not changing. I can't change my name. okay. Okay. It is with my son's name. Right. Right. So Dr. Saeed, you have to give me a word go, and then we can formally start. I'm waiting for your signal. I see 1 minute more, and Professor Gajen Singh is joined, so you can ask him. We'll wait for some more time, or we can. Right. I think we can start exact time. I think 1 more minute. Right. Just give, because 1929 I see. Right. Singh Saab, namaste. Gajendra Singh sir, namaste. Okay. Professor Gajendra Singh, namaste. Good evening, everyone. Good evening, Vishwanathan. Happy to see you. Yeah, Guarantor, how are you? Fine. Thank you. Yeah, good to see you. Good. Yeah. Mr. Ghole also checked video. शहा साहेब घोले साहेब दिसत आहेत, त्यांचा व्हिडिओ चेक झालेला आहे. थँक्यू डॉक्टर. Fine. Good. So you have all the speakers are all warmed up. We have three academics and three farmers. So that is all a good warmed up for the presentation plan as per plan. So we all are here. Now it is up to you now. Good. Just give a minute. Dr. Gajen Singh is not visible. I think he lost his line probably. We'll give him a minute to come and join, or we'll start. Vijay, can you check up? Gajen Singh is there? Please. Dr. Said, namaste. This is Ramesh. Ramesh. I will see you. I am looking forward to this webinar. Great people are there today, so we are looking forward, and we would like to connect with them eventually, because we have a big agenda. So I will help. I will connect all of them. That is Dr. Paroda and Dr. R.B. Singh have inspired us to come together. The people in USA and everywhere and India, and work for our motherland. That's what our goal is. And so we want your help and cooperation of all of you. Yeah, thank you. Okay. I think we'll Naren. Yeah, maybe Vijay, can you call on WhatsApp Professor Gajendra Singh and just say he was Vijay? there. I saw him here, Right. and he was talking to somebody on the phone. Right. Oh, he's now there. he has come. He is there. Okay. Singh Saab, namaste. I was in another meeting with Bihar. Okay. Namaste. I would like to now take this opportunity to start now. First, everybody, namaskaram. Welcome. Good evening. And let us start today. We have an interesting session in the series from Rahuri. And I know many people have visited there also. They've done excellent work, and we are bringing together the experience of the farmers who are benefited from there also, which will give us a lot of insight into how we go ahead. I would now request everybody to mute other than the speaker only, please. Everybody to mute. I'm starting the program now. Please mute, all of you, except the speaker. I just want to say hello to Dr. Patil and Sunil Gogantiwar and whole team from Rahuri. Hello, sir. Yeah. I was about to come to it. You to welcome first and give her the you welcome. Sorry, once again. I would request Dr. Gajen Singh to start this program with a welcome, but introduction of the of our Honorable Vice Chancellor will be done by Dr. Narendra Shah. Dr. Gajen Singh, please. Thank you, Syed. This is really a very good development that the
one university takes the responsibility. I think Professor Viswanathan started from TNAU team, that system. And I think this is a extremely good development that the university presenting a full program, bringing academicians, researchers, field workers, farmers, all on one platform. So I'm looking forward to especially today's presentation because I have been involved a little bit with their program from the formulation stage of NIHEP, and I'm very excited. So let's not waste time and move. Thank you. Can I invite Dr. Narendra Shah? Please introduce the Honorable Vice Chancellor. Right. Yeah. So good evening to all of you from this part of the world, and good morning to those who have joined from US, including Professor Gajendra Singh. It really gives me an immense pleasure to welcome you all. My name is Narendra Shah, and I must say here, and like what our friend Dr. Said, who started along with Dr. Indramani on this ISA platform, for last 2 years, I've been attending this 1.5 hour session, and every Saturday, for example, we look forward to these webinar. As Dr. Said calls me as a proud alumnus of MPKV Rahuri. So friends, I taught at IIT Bombay for some 30 plus years and kept telling my students that data and numbers in particular bring a clear evidence, and evidence then provides ease in decision making. You will all agree with me, which thus creates an ecosystem that has a multiplier effect in technology adoption and expansion. And farming, of course, is no exception. Our end user farming committee keeps demanding us the results-based assurance. If you want them to sort of adopt any new technique, new process, new technique. Sorry, Naren, please unmute yourself and talk, please. Narendra Shah, please unmute. Okay. Oh, sorry, all that I spoke. No, only for last 15 seconds. Right. So friends, we are all extremely fortunate this evening to have, let me call our brand new Honorable Vice Chancellor of MPKV Rahuri, Dr. P.G. Patil. Dr. Patil at IIT Bombay, the director is considered to be new for first 6 months. So with that kind of a system, allow me to say a new Vice Chancellor of MPKV Rahuri, but you can correct me if it is more than 6 months. Dr. Patil himself is an engineer, is an alumnus of MPKV Rahuri, College of Agricultural Engineering. In fact, Professor Singh, a few weeks back when all of you from Pantnagar University, one after the other, were introducing as graduate of Pantnagar, I started feeling feverish. And my fever went up when TNAU undertook the session last week, and fever in positive vibes, in the sense that I said, like I have been visiting, or at least of late, I visited MPKV Rahuri, seen their labs. And as you said, Professor Singh, you only sort of initiated some of these labs. And it was sort of, a desire of everybody that ISA platform, they should talk about their work. So Dr. Patil, who himself had done first-hand research, I know of, he has done technology transfer. And also as a team leader, he guided CIRCOT of ICR, which is located here in Matunga in Mumbai, to become a leading R&D center in ICR system pan-India. Dr. Patil, we are extremely thankful for joining in spite of your busy schedule, busy travel. I am aware of it. We just met 10 days back, and you kept telling that, the day after day, like what is your kind of schedule. We welcome you, and we would like to request you to kindly say a few words to this August gathering of agricultural engineering brothers and sisters. Dr. Patil, please. Good evening, everybody. सबसे पहले मैं गणेश चतुर्थी की
सभी को शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छा देता हूं। ऑनरेबल डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र जी, डॉक्टर शाह, डॉक्टर सैयद, डॉक्टर विश्वनाथन, ऑनरेबल वाइस चांसलर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर राठौड़ जी. As you are aware that and all the participants in this today's webinar, all our fellow agricultural engineers, technologists, agriculturists, farmers, students, as you are aware that today's event 3.9 automation in agriculture is organized jointly by our own organization, that is ISCE, and our university MPKV Rahuri. At the outset, I am very much delighted to be part of this event, as all of us know that automation in agriculture, which is the need of hour for many reasons, and we could showcase this impactful work done by our university MPKV in this direction under NAEP project, Center for Advanced Agricultural Science and Technology for Climate Smart Agriculture and Water Management. Today, as you are all aware, we will be deliberating on 6 subjects on automation in agriculture by 3 very senior and experienced and learned scientists from Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri, that is Dr. Gorantiwar, Dr. M.G. Shinde, and Dr. Nalawade. And I am also very much happy to inform you that 3 progressive farmers who are also present, and they are also presenting and sharing their experiences in automation in agriculture. And these names of these progressive farmers are Sri Rahul Rasal from the Ahmednagar district, Dr. Ravindra Nikam from Jalgaon district of Maharashtra, and Dr. Sandeep Ghole from Ahmednagar district of Maharashtra. At our university at MPKV Rahuri, which is mandated to excel in agricultural education, agricultural research, and agricultural extension education. To begin with, what we have done in agricultural education as regards to automation, that we have prepared, number one, we have prepared the framework for 1 year postgraduate diploma in climate smart agriculture with 5 trades. Number one is geoinformatics, second one is robotics, third one is a natural resource management, fourth is a precision water management, and fifth is entrepreneurship in climate smart agriculture. And we have developed 72 courses for PG diploma under NAEP of ICR New Delhi. Secondly, under education, we have developed 3-week certificate courses under climate smart precision agriculture. Thirdly, in this education side, we have designed postdoctorate research program for this climate smart precision agriculture. And for that purpose, I request some sponsorships from our alumni and other organizations. And fourthly, our university also strengthened course content of master's and PhD program in agricultural engineering as well as agriculture with non-gradual and optional courses on climate smart precision agriculture. This is all about education side. Then next, in the research side, as regards to research in automation in agriculture, number one is under NAHEP. We have established state-of-art laboratories on application of drones, robotics, sensors, and so forth. And I'm very happy to inform all of you that I think these laboratories are actually at par with the international research institutes maybe located in Europe, USA, and Australia. Secondly, as regards to research, in our farm, we have developed climate smart blocks and on-farm facilities for the research for the students as well as our faculty members. Thirdly, in research side, our scientists and students already started research studies on application side
with focus on small farms, and let it be a geoinformatics, drones, robotics, sensors, IoT, artificial intelligence, precision farm machines, mobile and web-based applications. This is all about research side we are doing at our university. And lastly, extension education is also a very important part of the university, that whatever we are doing the research, it should go to the farmers field. And in extension, we university has taken lead in extending Food and Agricultural Organization's concept of climate smart villages to climate smart digital villages. And I am very happy to inform you that we are again going ahead of FAO, that we are going to step ahead, that we are converting climate smart digital villages into climate smart digital green villages. Secondly, in the extension side, for the extension, we are working with the NGOs, alumni associations, industries, and other government departments. And we are validating the climate smart technologies developed by our university in these selected villages. I will not, and details of this, all these will be given by our learned speakers during this webinar. So I will not take much time, but to conclude, vision of our university is not only make farming productive, but also profitable, sustainable, self-reliant, and attractive through this automation in agricultural theme. With these words, I once again thank you, extend my thanks to all the dignitaries who are present in today's webinar, and I hope the deliberations in this today's webinar will be very useful and fruitful, and it will give the roadmap for the future research work in this direction. Thank you once again. Thank you, Dr. P.G. Patil. I will request Dr. Gajan Singh to say thanks to Dr. P.G. Patil. Maybe he's busy. He might. Please. Dr. Gajan Singh. You have to unmute yourself, Dr. Gajan Singh. Yeah. Thank you, Syed. I'm extremely happy to see Dr. Patil in this position and also leading the team for today's presentation, especially the co-leader. I say Sunil is the leader of the team actually from the NAHEP. I know Dr. Patil for some time. I think I was the one who posted him at Nagpur Ginning Center. And there was a kind of a problems, little challenging, but I think people like him proved him that ultimately, which was the field which was dominated by chemists and physicists, agricultural engineer became the director of CIRCAP, and now he is the vice chancellor. So I'm extremely proud of achievement of Dr. Patil, and he has set a very good example for professionals to follow, how to contribute. I think practical contribution from CIRCOT, not only CIRCOT got a recognition, but the whole ICR system also got a big recognition because of that contribution. I think with these remarks, let us proceed and wish you all the best. Okay. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Patil. Next program, I would like to request Dr. Gorantiwar directly. He doesn't require much of introduction. I know him. He is the PI of the program, and he is a very dynamic person. I have seen him in different places, not only in Rahuri. He is very dynamic. He takes the leadership first and comes forward to anyone in the beginning. He is the one to come forward. And I recall that when I visited Rahuri, he called me separately and told me, please talk something to motivate the students. Please talk something to motivate the students. Very rarely I hear that professors are interested that I have to give a talk on motivation. Thank you, Dr. Sunil Gorantiwar. Introduce yourself, and the floor is yours. You have to introduce the rest of the people, please. Yeah. Thank you very much. I think I'm audible. Yeah, and yes. At the same time, my first slide is visible too. Yes, sir. Yes, sir. Thanks very much, Honorable past President of ISI,
Dr. Gajendra Singh ji. Very happy to see him from such a long distance. Honorable Vice Chancellor of Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri, Dr. Prashant Kumar ji Patil, Honorable past ex-Vice Chancellor of PDKV, Dr. V.M. Mayande, and all other dignitaries, those who are present on this occasion, including Professor Tiwari from IIT Kharagpur and all others. In fact, first of all, let me thank from our group and university to IIC for providing this platform and showcase for giving opportunity to showcase for some of the technologies which were developed, of course, in collaboration and under guidance of many who are present on this occasion. We three from MPKV will be presenting. Myself will be mainly focusing on the real-time management technologies, followed by Dr. S.M. Nalaude, who will be mainly focusing on drone and robotics and the infrastructure that we developed, and Dr. M.G. Shinde on the concept that we adopted on climate smart digital village, and followed by three farmers. Okay, I understand that the time provided is short, and but I will try to concise everything within the time slot that have been provided to us. As I told, it is basically on real-time crop management technologies and with focus on irrigation management technologies. As all of us know that there is a lot temporal and spatial variability in agricultural system, and this variability is in fact felt with great evidence of climate change and climate variability. But our traditional agriculture that was based on considering the averages over the years as far as the temporal variability is concerned, and averages over the region as far as the spatial variability is concerned, tend to utilize the inputs which were in fact in a large amount, large quantity, and as a result of which our input use efficiency is very low, and also when we compare to other countries, it is still very low. The reason is that our traditional practice is not to consider the temporal and spatial variability. When we consider the temporal and spatial variability, then the traditional agriculture is converted into the precision agriculture, in fact. But at the same time, if we want to consider all this variability, and also if we want to move to the precision agriculture, we need to adopt the real-time agricultural management practices. And for this purpose, we need all kinds of the digital agricultural technologies that involve sensors, AI and ML techniques, IoTs, mobile and web-based applications, decision support system and whatnot. In fact, in the Western countries such as USA, Australia, Canada, and Europe, all these technologies, they have been developed, or they have started for developing all these technologies, but our main limitation is that we have to develop these technologies for the small farms. So we have kept our target basically to focus on the small farm, to develop the technologies for the small farm. So considering this variability in mind, in fact, we have submitted the proposal. We had submitted the proposal for Center for Advanced Agricultural Science and Technology for Climate Smart Agriculture and Water Management. I think Dr. Gajendra Singh ji was probably one of the referee for reviewing this particular project. But over the years, as also told by our Honorable Vice Chancellor, we developed the entire education program for this purpose, and at the same time we also developed the laboratories and also developed some of the technologies, and also prepared the framework for other technologies too. I would like to focus mainly on the irrigation management technologies. In fact, when we say that irrigation management, as all of us know that irrigation management depends on soil, weather, crop, and irrigation systems variability and all those things. And if we want to apply the water with precision whenever needed and at a place and in a quantity that is needed, then we have to consider the real-time weather data, real-time crop data, and also the variability in soil and irrigation system management. So for that, first we developed a mobile application which is called as Phule Jal, that enables
any farmer or practitioner to estimate the evapotranspiration at specified location and also in real time, that is for today, yesterday, or 2 or 3 days ahead. And then we used this, we have developed the mobile application, and at the same time we have developed the web-based application for real-time estimation of evapotranspiration. Further, we converted that into irrigation scheduling system, because when we have to give the farmers certain tools, then farmer is interested only in 2 things. Once he or she adopts particular irrigation method, when to irrigate and how much to irrigate actually, or when to irrigate and for how many hours the pump should be operated. So we build up one simulation model behind our original Full-Agile mobile application, and also at the same time with the help of the batteries of digital lysimeter, we developed certain parameters such as crop coefficients and weighted area factor. So all the parameters which is required for real-time irrigation scheduling, those we developed. And then we also developed one simulation model integrated with our Full-Agile mobile application, and developed another mobile application which is called as Full Irrigation Scheduler mobile application that provides the information to the farmers when to irrigate and for how many hours the pump should be operated, and that also in real time. So we also developed its web-based application as well. Then the next thing was we developed the fertigation scheduler as well, because in Maharashtra many farmers they adopt the drip irrigation system, and in case of drip irrigation system, with every drop of water we must apply the nutrients too. So for this we also developed the Full irrigation scheduler, and that will be released in fact this year in the meeting of our all 4 agricultural universities together. Further, we in addition to the development of mobile applications and also the web-based application, we thought that let us bring the entire agricultural system, management system on map actually, just like Google Maps. So we started developing the map-based application. So we developed the map-based application for evapotranspiration, wherein you click on Google Map at any point, you will get the evapotranspiration estimates for today and for 3 to 4 days ahead. And further, we are converting that into irrigation scheduling system. So this means that the farmer can locate any farm on Google Map and then just provide the requisite information, and farmer will be provided with the information on all irrigation management actually. And further, this map-based concept we want to extend for other agricultural management system in coming years. Then we also converted that into web-based, as I told. Further, we converted the entire system of this mobile application in IoT-based actually. So this is the IoT-based auto flow irrigation scheduler. Now, in this case, the weather data is fetched either from the weather stations or certain open weather or IMD weather service or offline weather data, and that is fetched automatically to our Full irrigation scheduler application. Then soil data is also fetched, or farmer can give, and the irrigation scheduling parameters are calculated, that is when to irrigate and for how many hours the pump should be operated, and that pump is operated remotely from any location. The main feature of this is that it is not just remote operation of the pump, but the amount of the water to be applied and when to apply are estimated purely on the scientific basis in real time and for that specified farm, whatever is the size of the farm actually. Okay. Then there were certain queries from the farmers that we have many crops on field at a time, then our valve should also operate remotely. Then we converted this entire IoT-based system into the multi-plot kind of the thing. Means if on one piece of land, if there is onion, and another piece of land, if there is tomato, then the irrigation scheduling for all these crops are estimated in real time, and the sequencing of the valves is also decided, and all those valves, they are operated in sequence remotely. Okay.
and this is the complete IoT-based system without involvement of any human interface actually. Then, as I told, we develop full irrigation scheduler, full fertigation scheduler. Now we are developing the IoT-based Venturi actually. Now in this case, there are different automatic fertigation scheduling systems available from the different manufacturers, but they are based on certain recommendation. But herein we provide as per the need, and entire backup is provided by our experimental data, and we are trying to make the Venturi IoT based so that the small farmers they can adopt the system. So this was all about the weather-based system, but at the same time, we are developing this moisture sensor-based system. So for that, one of the big challenge was to develop the moisture sensor itself. Since last 2 years, we are developing, and probably within another 2 months, our own moisture sensors will be properly calibrated and validated. And once those are done, we have developed the rest of the system in which the entire irrigation scheduling will be done with the help of the moisture availability in the soil root zone, and pumps will be operated remotely according to that. So this is all about the irrigation management thing. I wanted to focus only on irrigation management, but in another 2 minutes, I would also like to tell that we are going to extend this system for the forecasting of pest and disease, and also pest and disease management. Parallelly, one webinar is also going on in joint collaboration with ICR and Purdue University. So there, the similar kind of the discussion is going on. And but let me tell our esteemed guests that at MPKV Rahuri, we have developed the framework, and we have started taking the hyperspectral and RGB images for some of the pests and diseases for cotton, but we'll be planning that for other crops too. Okay. Then for the larger area, say for example, canal and all those things, we are preparing the drone-based real management system in association with the Water Resource Group 2030 of World Bank and Water Resource Department of the state. So this is in fact in short regarding irrigation, but let me tell you that we are also focusing on other aspects too. And for this, I would like to thank profusely our university administration, NAHEP, then ICR, and at the same time, the esteemed, our guide, Dr. Gajendra Singh ji, Dr. Mahende sir, and all other. I think with this, I would like to remain. Thank you very much. Thank you, Dr. Sunil Gorantiwar. I think you have to, it's a very interesting insight to the real practical problems of farmers. You talked. It makes me very happy. At least the identification of problems are very clear, what you expressed, than what I heard in the last 2 years from a lot of experts. You identified the issue, small farmers, how to help. Start with the irrigation first. This is one of the things, I think, saving the farmers the input costs. We are going next to disease. I think it's excellent topic what you given. I would request the next speaker to be introduced by you, Dr. Sunil Gorantiwar. Yeah, I think next speaker is Dr. Sachin Nalode, who is head department of farm machinery and power engineering, and he's actually associated with the NAHEP project, and he looks after the drones for spraying and drones for mapping, and also robotic application. I think Dr. Sachin, please. Thank you, sir. I hope that I am audible. Yes. Yes, yes. Yes, Yeah. please. Thank you. Good evening to all dignitaries, Dr. Gajendra Singh, Dr. Patil, Dr. Mahende, and all members from ISC and farmers, all those who are hearing me. Thank you for this opportunity, and I'll be sharing my screen. Kindly allow me to share. Because, Yeah, you are allowed. You are allowed. Go ahead. Go ahead. Yeah. Sachin, I am not having any sharing rights. Now, you try now. Can I share my? Yeah. Share now. Try now. त्या मेल बॉक्स मध्ये काही फार्मर म्हणतायत की हिंदी मध्ये थोडंसं घ्या. Dr. Saeed, there are several. No problem. There are no. Several Yeah, I have seen. You Yes. can speak in Hindi also. It's understood. There is no problem. Mix together Hindi and English. In between.
Yes. No, absolutely, it's very good. Go ahead, please. Yeah, Hindi mix. Yeah. Can you share now? There is issue in sharing No, you my can share. presentation. Yeah, of I course. think. Of course, you can share. Because my PC has stopped working, and I have to do it from my Dr. Sayed, I think Dr. Sachin is not given the sharing right. What I see from. Yeah, I can't. Wait a while. Let it be. Please make him co-host, then he will get all the right. Yes. Yes, Sachin, you are co-host now. Please share. Yeah. Yeah. No, it is. It's not required to make co-host anyway. I think there is issue. Dr. Sunil, just in case. Next, can we shift to next speaker? So yeah, that, if you have no, Dr. Sunil, if you have his slide. You can share screen. Sir, please share my presentation I have sent you. That is in PDF form basically, but I will not take more time. This is a presentation regarding only robotics and drone activities, what we are carrying out at MPKV. Sachin, I think probably speaking in Hindi, because I also read so many comments from farmers. I didn't realize. Yeah. Okay. So ये जो हमारा presentation है, ये drones और robotics जो दो areas है जो नए फार्मिंग में आ रहे हैं, और बाकी जो सारे देश है वहां पे तो बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, बट इन इंडिया हम लोग इसको थोड़ा सा नया सोच रहे हैं. प्लीज गो अहेड सर. ये तो हमारा ड्रोन है जो हम लोग यूज करते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर के साथ. ये छोटा सा लैब है हमारा जहाँ पे हम लोगों ने ड्रोन्स, रोबोटिक्स एंड IoTs का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हम लोगों ने ये लैब बनाया है. यहाँ पे हमारे पास 37 ड्रोन्स है जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग जो मैक्सिमम कॉस्टिंग वाला ड्रोन है. हम लोग 400 नैनोमीटर्स टू 1700 नैनोमीटर्स की रेंज का जो सेंसिंग कर सकते हैं वो ड्रोन है. प्लीज गो अहेड सर. इसमें हमारे पास फिक्स्ड विंग ड्रोन है. नेक्स्ट स्लाइड इट इज शोन दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स विद अस. नेक्स्ट सर. दिस इज ये जो स्प्रेइंग ड्रोन है, मैपिंग ड्रोन है. और मैपिंग ड्रोन में हमारे पास जो मैक्सिमम सेंसर्स जो यूज करेंगे वो है 3D LiDAR थर्मल इमेजिंग सेंसर के साथ भी है. और फिक्स्ड विंग ड्रोन जो अगर एरिया ज्यादा है हमारा तो इसके लिए फिक्स्ड विंग ड्रोन्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है, इसलिए थोड़ा छोटे सेंसर्स यूज करने पड़ते हैं. एंड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर्स जो है, जो हेवी है, तो हेक्साकॉप्टर ड्रोन हम लोग यूज कर रहे हैं. स्प्रेइंग एंड स्प्रेडिंग ड्रोन्स आर यूज फॉर स्प्रेइंग, केमिकल स्प्रे करने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग. वैसे ही हम लोग ये फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं. उसके साथ जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस अभी जो टेस्ट कर रहे हैं, उसका एक प्रोजेक्ट हमारे पास है. 9 अलग अलग जो फॉर्मुलेशंस है वो एक साथ टेस्ट करने का काम अभी चल रहा है. और लास्ट में जो है ट्रेनिंग ड्रोन. हमारे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि इन ड्रोन्स के साथ ही चलिए सर आगे नेक्स्ट. इन ड्रोन्स के साथ हम लोगों ने हमारी टीम तैयार की है जिसमें 5 लोग जो है अभी सर्टिफाइड पायलट्स है, और उसके उनके लिए वी आर ऑलरेडी लाइसेंस्ड पायलट्स. इनमें एक फैकल्टी है, एक टेक्निकल स्टाफ भी है, एक PhD स्टूडेंट और 2 रिसर्च एसोसिएट. ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी लाइसेंस ले चुके हैं और हमारा काम चल रहा है. और
नेक्स्ट सर, जो हम फक्र की बात है हमारे लिए कि हम लोग पहले 50 पायलट्स हैं जिनमें हम लोग गिने जाएंगे, जो भारत के पहले 50 ड्रोन पायलट जो लाइसेंस है उनमें से हमारे 5 है। और आई होप कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो अभी हम पहले 5 ही हैं, उसके आगे अभी नेक्स्ट नंबर्स में आएंगे। रिसर्च एक्टिविटीज में बहुत सारा हम लोगों ने रिसर्च ऑलरेडी शुरू करके रखा है, बिकॉज इट इज न्यू टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों ने शुरू किया है प्रिसीजन एग्रीकल्चर में वेरिएबल रेट फर्टिलाइजर एप्लीकेटर पे 2 पीएचडी स्टूडेंट काम कर रहे हैं, और ऑटोमेटिक वेजिटेबल ट्रांसफर प्लांटर पे भी एक पीएचडी स्टूडेंट काम कर रहा है यहाँ पे। और हम लोग काम कर रहे हैं क्रॉप डाटा स्काउटिंग, जिसमें प्रॉक्सिमल सेंसिंग प्लेटफॉर्म पर हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर यूज करके उसका डाटा लिया जाएगा, ड्रोन पे से डाटा लिया जाएगा, एंड दैट विल बी कंपेयर्ड। दीज आर द फ्यू प्रोजेक्ट्स। इसमें हम लोगों ने रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं, सेंसर्स और मैकेनाइजेशन एप्लीकेशंस जो है, तो हम लोगों ने 2 एप्लीकेशंस भी तैयार किए हुए हैं जो ऑलरेडी कॉपीराइटेड है, पुले सन्मान और पुले सैम, जो सर्विसेज फॉर एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का CHC ऐप है उसी की तरह है, लेकिन दूसरा जो है सॉफ्टवेयर टू एक्सेस नीड ऑफ मैकेनाइजेशन एंड अवेलेबल नेटवर्क सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम लोग सर्वे की बात कर रहे हैं, जो लोगों का फार्मर्स के पास जो भी इक्विपमेंट्स है वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, उनको किस चीज की जरूरत है, एंड गैप इन द मैकेनाइजेशन, जो भी गैप आ रहा है वो कैसे फुलफिल करे, और उसके लिए जो उनके पास ही है आसपास 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के एरिया में जो भी उनका सर्विस प्रोवाइडर है उनका डाटा भी कलेक्ट हो रहा है। अब तक के करीबन 4,500 फार्मर्स का डाटा हमारे पास है, उसके साथ 1,000 सर्विस प्रोवाइडर्स का भी डाटा हमारे पास आ गया है, और ये बिल्डअप होता जा रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये आगे बढ़ता जाएगा। इसमें सर इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग रिसर्च के साथ इसका डिसेमिनेशन भी कर रहे हैं। करीबन 8 अलग अलग ट्रेनिंग्स हमने, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स, एक्चुअली इसमें बिगर नंबर्स भी है, 800 के करीब ज्यादा से ज्यादा लोग थे, और कम से कम 9 लोगों का ट्रेनिंग, मतलब 1 मैन टू मैन ट्रेनिंग भी किया है हम लोगों ने, और ऑनलाइन बहुत सारे लोगों के लिए ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। और 21 डेज का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। दीज आर सम ग्लिम्पसेस ऑफ दोस ट्रेनिंग व्हिच वी हैव कंडक्टेड, demonstrations and training, actual practical work training in the field, and operators training for few of our staff members, वो भी किया है। कुछ हम लोग अभी नए लोग तैयार कर रहे हैं, तो जो आगे जाके काम करेंगे। नेक्स्ट, प्रिसीजन एग्रीकल्चर मशीनरीज हमारे पास जो है उसमें अभी जो हम लोग बोल रहे थे कि वेरिएबल रेट एप्लीकेटर, जो फर्टिलाइजर एक साथ डालने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके जहां जरूरत है वहीं पे डाले, तो ग्रीन सेकर पे बहुत लोगों ने काम किया है। हम लोग चाहते हैं कि उसका कॉम्बिनेशन करके मैप बेस्ड जो वेरिएबल रेट एप्लीकेटर है जो बाहर यूज होता है उसका, और ऑन द गो सेंसर्स, वो दोनों का एक साथ कॉमन करके करेक्शन करने के बाद उसका एप्लीकेशन हो, वो अभी PhD का प्रोजेक्ट है, उसमें काम हो रहा है। और प्रिसीजन प्लांटिंग पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो रोबोटिक प्लांटर के साथ काम करेगा। रोबोटिक्स में हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट आगे सर, ये जो 2 एप्लीकेशंस के बारे में मैं बात कर रहा था वो अभी गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, कोई भी जा सकता है, वहां पे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं इन ऐप को। और ये थोड़ी सी अचीवमेंट्स है हमारी सर, ये अचीवमेंट्स है जहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रेजेंट किए थे प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट जो है वो पुले रोबो है, वो जो स्प्रेयर है, ट्रैक टाइप स्प्रेयर है, जो अभी मल्टीपर्पज इक्विपमेंट करके प्रमोट होगा, जो ऑलरेडी एग्री इंडिया हैकाथॉन में विनर रह चुका है। जो कृतज्ञ जो नाहिब ने एक
कंपटीशन कराई थी नेशनल लेवल पर। उसमें 3 हमारे प्रोजेक्ट वो फाइनलिस्ट में आए थे। और हम लोग काम कर रहे हैं ई अंतरा लेबोरेटरी IIT मुंबई के साथ, जो IIT बॉम्बे का ई अंतरा प्रोजेक्ट है उनके साथ अभी एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है, तो ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको प्रैक्टिकली उसका नॉलेज मिले और वो प्रोग्रामिंग एंड एग्जीक्यूशन करने के लिए तैयार हो जाए। सो ये थोड़ा सा सर हमारे इसके बारे में जो हम लोग काम कर रहे हैं रोबोटिक्स और ड्रोन के एरिया में। Thank you very much to the university, MPKV, ISCE, and all the participants. Thank you, sir. Thank you, Dr. Sachin Alavade. Very impressive. I have seen the robot when I visited there, but you are working in multiple areas. What I like is you're looking fertigation also, and I think it's not only from spraying from the top, but also the fertigation. I think it's a good approach. And I'm very sure we'll see soon the results in the field. I would request now Dr. Sunil Gurantiwar to introduce the next speaker. Yes. Thank you very much. Next is Dr. Mukund Shinde, who is Professor Soil and Water Conservation Engineering, and at the same time co-principal investigator of CAST project on climate smart agriculture and water management. So I would like to request him to have his presentation. Thank you, Dr. Gurantiwar. Respected Dr. Gajendra Singh ji, our Honorable Vice Chancellor, Dr. Patil, then former Vice Chancellor, Dr. Mayande, all other dignitaries, including Professor Narendra Shah from IIT Bombay. Sunil, can you see my presentation? Presentation this thing? You have to share. You haven't shared actually. And you have sharing rights. Yes. Dr. Sunil, just in case, Sachin. Yes, sir. It's okay. Yeah, it's okay. Fine. Perfect. Okay. Just make it full screen. Okay. It's perfect. Okay. Thank you. धन्यवाद सभी का। हमारे बीच में कुछ किसान भाई हैं महाराष्ट्र से, उनके लिए अभी हिंदी में ही हम बताएंगे। अभी डॉक्टर गुरंटिवार और डॉक्टर नलोडे ने जो भी टेक्नोलॉजीज बताई है, जो हमने इस कास्ट प्रोजेक्ट में डेवलप की है, वो सिर्फ हमने उसको कैंपस में लिमिट नहीं रखा है। तो हम कुछ 9 विलेजेस हमने अडॉप्ट किए हैं, और उस विलेजेस में हमें टेक्नोलॉजीज आउटरीच और एक्सटेंशन उसका कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपको सभी को इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो काम है क्लाइमेट स्मार्ट और डिजिटल एग्रीकल्चर विलेज के लिए, इसके जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, एक तो हमको ये फार्मर को उसकी कैपेसिटी बिल्ड करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो फर्स्ट तो फार्मिंग पे ही होने वाला है। और जो हम फार्मर्स की प्रोफाइल अगर देखेंगे तो अलग अलग तरह के फार्मर्स है। हम जो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल फार्मर्स है, कुछ एडवांस फार्मर्स है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट चेंज के जो भी इम्पैक्ट है और जो भी उसके कंपोनेंट्स है, हम उसके बारे में ये फार्मर लोगों को उसकी अवेयरनेस उनको कर रहे हैं और उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो फॉर एग्जांपल क्लाइमेट की जो इंफॉर्मेशन है, सर्विसेज है इंश्योरेंस के लिए, उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। देन क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है एग्रीकल्चर की और क्या क्या टेक्नोलॉजीज है वो हम उनको बता रहे हैं। और उसमें जो लोकल और नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, आइदर पब्लिक और प्राइवेट, उनका भी इसमें हमको सहयोग लेना पड़ता है, और फाइनेंस का भी हमको इसमें सहयोग चाहिए। फार्मर जो नॉलेज है उनकी जो लेवल है, अलग अलग तरह की लेवल, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको जो हमारे जो कैपेसिटी बिल्डिंग के जो प्रोग्राम है वो हमको थोड़ा डेवलप और डिजाइन करना पड़ता है। और इसमें नेशनल और सब नेशनल प्लान्स एंड पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हमको ये हमारे जो एक्सटेंशन और आउटरीच के जो प्रोग्राम है वो हम उस डायरेक्शन में हम उसको डिजाइन करते हैं। तो जो हमने विलेजेस इसमें अडॉप्ट किए हैं, 9 विलेजेस है, तो इसमें
पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक भुसकेवाड़ी नाम के विलेज है, और एक अहमदनगर में अकोले जो तहसील है उसमें हमने 7 विलेजेस का एक क्लस्टर एडॉप्ट किया है। और अगेन एक अहमदनगर के पास ही एक विलेज है बाबूडी गुमट, उसको भी हमने एडॉप्ट किया है। तो ये 9 जो विलेजेस है इसमें हमारा जो हमने जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं तो ये सब हम वहाँ उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो ये जो बुचकेवाड़ी जो विलेज है इसमें, और ये जो विलेजेस है इसमें ऑलरेडी एनजीओ काम कर रहे हैं, तो हमने उनके साथ हाथ मिलाए हैं और हम नॉलेज शेयरिंग का काम कर रहे हैं। तो नॉलेज शेयरिंग ऑल्सो द टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की वो सब हम इस विलेजेस में अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये जो बुचकेवाड़ी विलेज है यहाँ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, देन हम मोबाइल एप्लीकेशन भी उनको दिए हैं। अभी अभी रिसेंटली जो डॉक्टर चिंतला है चेयरमैन नाबार्ड, उन्होंने विजिट किया है, काफी अप्रिशिएट किया है हमारा काम। हम वहाँ फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, देन उस मेलावा लेते हैं, गैदरिंग फार्मर्स रैलीज, देन डिफरेंट एक्टिविटीज में उनको डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं लाइक एडवांस सीड ट्रीटमेंट्स, देन डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, देन गोरंटेवार साहब ने जो IoT बेस्ड सॉइल मॉइस्चर सेंसर की टेक्नोलॉजी बताई है उसका भी हमने उधर डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, वहाँ वो अडॉप्ट भी करते हैं एज ए पायलट प्रोजेक्ट। इसमें GIS रिमोट सेंसिंग का भी हम इस्तेमाल करते हैं, और फाइनली दीज आर ऑल इंटीग्रेटेड इनटू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये बुचकेवाड़ी विलेज है, इट इज अराउंड मे बी 60-70 किलोमीटर फ्रॉम पुणे, लेकिन काफी अच्छा काम वहाँ चल रहा है। और हमारे जो भी टेक्नोलॉजीज है, और ये विलेजेस सिलेक्ट करने में बेसिकली प्रायोरिटी जो थी तो फार्मर्स की एक्सेप्टेबिलिटी, उनका जो इंटरेस्ट है वो हमने ध्यान में रखते हुए ये विलेजेस को सिलेक्ट किया है। और यहाँ हमारे जो स्टूडेंट है PhD के, उनको भी हमने अलॉट किया है। तो ये जो बुचकेवाड़ी का जो विलेज है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, इसमें हमारे PhD स्टूडेंट काम कर रहे हैं, और जो बेसिक डेटा भी कलेक्शन है और वहाँ मॉडलिंग का भी काम होता है, और वो जो PhD का जो रिसर्च है वो हमको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में और टेक्नोलॉजी आउटरीच में। जो हम इसको विन विन सिचुएशन जो बोलते हैं, स्टूडेंट का भी स्टूडेंट को भी फीलिंग आता है कि वो थियोरेटिकल काम नहीं करता है, उसका कुछ यूज है, तो और फार्मर का भी उसमें बेनिफिट है, और हमारे प्रोजेक्ट का भी उसमें डिसीजन मेकिंग में उसका फायदा होता है। और ये अगेन ये डॉक्टर चिंतला का विजिट है, हमारे कुछ मीटिंग के यहाँ फोटोज है, और यहाँ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का भी उसमें एक बार उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी। तो ऐसे एक्टिविटी हमारे हमेशा इस विलेजेस में चलते हैं। और ये मैंने आपको बताया अकोले जो तहसील है, थोड़ा हाई रेनफॉल एरिया है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ भी हमने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया है, हमने नहीं किया, तो एनजीओ ने किया है, लेकिन हम उसका यूज करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट क्रॉप कॉन्टिजेंसी प्लान है उसको हमने क्लस्टर लेवल पे उसको कन्वर्ज किया है। ये काफी इंटेंसिव एक्सरसाइज था, इसमें हमने कम से कम 8-10 वर्कशॉप लिए हैं, वो फार्मर के साथ ही लिए, और जो इसमें एक्सपर्ट है, एंड फाइनली इट वाज अप्रूव्ड बाय क्रीडा हैदराबाद ने इसको अप्रूव किया। इन हाउस हमारे यूनिवर्सिटी में इसके काफी वर्कशॉप हुए, और फार्मर्स यहाँ क्लस्टर विलेजेस में हमने काफी वर्कशॉप लिए, और फार्मर का जो प्रायोरिटीज है, उनके जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है उसको ध्यान में रखते हुए हमने वो जो डिस्ट्रिक्ट क्रॉप कॉन्टिजेंसी प्लान है वो हमने विलेज लेवल पे उसको कन्वर्ज किया है, और उसका हमने पब्लिकेशन भी किया है, इंग्लिश में ही है और मराठी में, लोकल लैंग्वेज। एंड दिस इज अगेन ये स्लाइड वही है क्रॉप कॉर्डिनेशन प्लान की। यहाँ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, वो 7 विलेजेस है, इसमें पूरी जो बेसलाइन इंफॉर्मेशन है, चाहे सॉइल हो, लाइफ स्टॉक हो, वाटर कंजर्वेशन हो, ये सब में वो विलेज लेवल क्रॉप कॉर्डिनेशन प्लान में इसका हमने इंटीग्रेशन किया है। Okay. और यस प्लीज गो ऑन। ओके। और हम जो दूसरा एक हमारा जो विलेज मैंने बताया बाबूडी घुमट, अहमदनगर के पास है, वहाँ हमने सॉइल हेल्थ कार्ड का भी काम किया है, और उस बेस्ड ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड वो फर्टिलाइजर प्रिस्क्रिप्शन एडवाइजरी हम फार्मर्स को देते हैं।
तो ये मराठी में या लोकल लैंग्वेज में ये सॉइल हेल्थ कार्ड है। ये उसका रिपोर्टिंग भी हम उसको फार्मर लोगों को देते हैं। और दिस इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर स्टेक होल्डर्स। इसमें हम ये सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है। इसमें क्या है कि फार्मर लोग इस पे बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे, स्पेशली उनके क्रॉप के बारे में। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे कोई आप एक सेंसिटिव क्रॉप ले लो ओनियन, तो अगर हमने इस ऐप को डिप्लॉय किया फार्मर कम्युनिटी में, और अगर फार्मर ने उसका डेटा फीड किया, तो ग्रेजुअली क्यूमुलेटिव एवरी वीक और एवरी डे फार्मर्स को या गवर्नमेंट को या अदर इंस्टीट्यूशंस को इसका रियल टाइम डेटा मिलेगा कि यूनियन का क्रॉप एकरेज कितना बढ़ रहा है। तो अगर वो ज्यादा एक्सेस हो जाएगा तो गवर्नमेंट को भी अलर्ट मिल जाएगा, फार्मर्स को भी अलर्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि यूनियन की प्राइसेस कितने सेंसिटिव है। तो इसी वजह से वो टू हेल्प द फार्मर्स एंड आल्सो पॉलिसी मेकर्स दिस ऐप हम डेवलप कर रहे हैं। ये बाबूडी घुमट जो मैंने आपको बताया, और इसकी एक सुंदरता ये है कि इसमें हमारी एल्यूमिनी एसोसिएशन भी इन्वॉल्व हुई है। तो ये बाबूडी घुमट जो विलेज है, इसमें हम इसको क्लाइमेट स्मार्ट डिजिटल विलेज कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी एक 10 दिन पहले यहाँ प्रोग्राम भी हुआ था हमारा, और उसमें नायब के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अग्रवाल साहब, जो हमारे नेशनल डायरेक्टर है कास्ट के नायब के, और कास्ट के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रभात कुमार, वो भी ऑनलाइन शामिल हुए थे। और हमारे कुलगुरु साहब के हाथों से ये फुले ऑटोमेटिक पंप कंट्रोलर हमने वहाँ डेमो दिया, और हमने वहाँ 4-5 सेट भी वहाँ फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट किए। तो जब ये एल्यूमिनी एसोसिएशन इसमें शामिल हुआ, तो ये बहुत ही अप्रिशिएट किया एल्यूमिनी लोगों ने। और ये जो हमारे एक एल्यूमिनी है सिंगापुर में, इंजीनियर विनायक, इन्होंने इमीडिएटली 1 लाख रुपए डोनेशन दे दिया। तो इस डोनेशन से हमने ये जो यहाँ डिजिटल डिस्प्ले देख रहा है आपको, तो ये डिजिटल डिस्प्ले हमने वहाँ ग्राम पंचायत में डिस्प्ले किया है। Your slides are not moving. Dr. Shinde, your slides are not moving. Yeah. Okay, you can continue then. ये अभी विजिबल है? No, we see digital support system for stakeholder. That slide. Oh, there is digital का slide. Lag. I think it is a lag. Okay, otherwise you keep on telling, and probably your time is also over. Yeah. Okay. तो आई एम सॉरी, एक्चुअली थोड़ा लैग है इसमें, मुझे जो स्लाइड दिख रही है वो आपको नहीं दिख रहे। तो ये बाबूडी घुमट जो विलेज है, यहाँ हमने वो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किया है, वो भी डोनेट मिला है। और एक डिस्प्ले बोर्ड भी हमने एल्यूमिनी एसोसिएशन के वहाँ स्पॉन्सर किया है। तो इन नटशेल द मैसेज इज दैट द टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप कर रहे हैं कैंपस में, वो हम इस जो पायलट विलेजेस है या हम डिप्लॉय कर रहे हैं, दैट इज द मैसेज। और हमें काफी अच्छा सहयोग इन किसानों से मिल रहा है। तो I will end this my lecture with thanks to ICR, NAYEP, MPKV Rahuri, and also the senior delegates like Dr. Gajendra Singh, Dr. Mayande, Dr. Patil, Honorable Vice Chancellor, and all others. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Mukund Shinde. Please unshare. Yeah. Dr. Shinde? Yes, just a minute. Yes. By the meantime, you can announce next speaker. Yeah, just yeah. Yeah, it's okay. Thank you very much. I'm very interested about climate, about Maharashtra. I have very short experience also. I think one of the few problems I'd like to take just about 30 seconds to tell. The problems we have are the first about 30% of non-germination of seeds. And we also have a problem of especially pre-harvest losses.
And we also have the problem of climate change. So there are no water storages anymore. So people are working on it. So the main problem is the farmers, they have no very less income. I just calculated somewhere in Maharashtra, they have about 1,500 rupees per month per acre, or 2,500 maximum per month per acre is income, whereas in Punjab around 6,500. So it was, I think we have a lot to do in Maharashtra, and climate smart or climate resilient agriculture is the priority. And I think the team will take up now. I think the what you have taken till now steps will help them. Thank you. With that word, I will ask Dr. Gorentua to continue with the farmers presentation. Yes, please. okay. धन्यवाद. अभी हम तीन किसान भाइयों को सुनने वाले हैं, लेकिन इसके पहले मुझे एक बात याद आ गई कि गजेंद्र सिंह साहब जो अभी हमें एडवाइस भी करने वाले हैं, तो उन्होंने 9 जनवरी 2020 को एक 50 किसानों का जो ग्रुप था उनको एड्रेस किया था. वो ग्रुप था बुचकेवाड़ी विलेज से. तो हमने वो कंसल्टेशन और उनका जो एडवाइस वो किसानों को मिला, उसके बाद हमने वो बुचकेवाड़ी विलेज में जो एक्टिविटीज है, क्लाइमेट स्मार्ट एक्टिविटीज है, वो हमने वहां चालू कर दी है. तो आपने वो 9 जनवरी को उनको एड्रेस किया था पूना में. तो अभी हम फोर्थ जो है चौथा प्रेजेंटेशन है राहुल रसाल, जो एक प्रोग्रेसिव किसान है. अहमदनगर जिले में पारनेर तहसील में एक निघोज नाम का गांव है, वो वहां से आते हैं. तो वो उनका अनुभव जो है और वो किस किस्म की खेती करते हैं, मेरे ख्याल से वो जो उनका अनुभव है वो हमारे सामने रखेंगे. रसाल साहब. यस सर, नमस्ते सर. चालू करा तुम्ही. नमस्ते सर. मैं अभी मेरे फार्म पे मैं वो एक्टिविटी कर रहा हूँ और वो फार्मिंग कर रहा हूँ, वो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ. तो मेरे पास 20 एकड़ ग्रेप्स है, 15 एकड़ पोमोग्रेनेट है और 10 एकड़ वेजिटेबल्स रहता है. और वो सीजनेबल उसका वेजिटेबल का हम चेंजेस करते हैं. तो ये मेरा ग्रेप्स है, ये इलोंगेशन सुपर सोनाका बोल के वैरायटीज है. तो ये अभी 7 ईयर का प्लॉट है. इसमें मल्चिंग का भी यूज कर रहे हैं हम और सब सरफेस इरिगेशन का भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इस वजह से मेरे पास पर्सनल वेदर रोटेशन है. हम टोटल स्प्रे इज प्रिवेंटिव स्प्रे कर रहे हैं और मैं वो दवा स्प्रे करता हूँ, उसके लिए आरओ पानी का इस्तेमाल करता हूँ. इस वजह से मेरा रेसिड्यू लेवल है वो कम आता है और कम से कम पेस्टिसाइड में मेरा फार्म एक्सपोर्ट हो रहा है. तो इसका ये साइज है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का पूरा ब्रिक्स उसका 22 होता है, साइज 16 प्लस होता है. ये एक्सपोर्ट का मेरा थॉमसन वैरायटी का प्लॉट है. ये मेरा 22 इयर्स ओल्ड ग्रेप्स है. ये ताशी गणेश वैरायटी का लास्ट ईयर का इसका फोटो है. और ये इसमें हमारा स्लरी प्रैक्टिस है. इधर ये बेरी कटिंग किया हुआ है, इसमें हम क्रंचीनेस और पल्प दिखाता हूँ. तो ये हमारा स्लरी माइक्रोवेल एक्टिविटी और हम वो स्लरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें इस वजह से इसको क्रंचीनेस और लस्टर सबसे ज्यादा आ जाता है. ये हमारा एक्सपोर्ट का रेसिड्यू फ्री यूरोप कंट्री के लिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं.
इसका साइज होता है 22 बेरी साइज होता है। ब्रिक्स उसका 18 प्लस हो जाता है। ये सुपर सोना का चाइना के लिए मार्केटिंग हो रहा है सर। और ये अभी यूरोप के लिए पैकिंग है। ये पैकिंग भी यूरोप के लिए हम पैक कर रहे हैं। ये अभी हम सबसे ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं हमारा वाटरमैन। ये मेरा वाटर टैंक है मेरे फार्म का। इसमें मैं सॉल्ट दिखाता हूँ इस पे। इस वजह से ये 2000 से 2500 तक उसमें टीडीएस है। और उसका पीएच 8.3 से 8.5 है। और ये हम सबसे ज्यादा काम हम इस पे कर रहे हैं। ये मेरा सहवाल गाय है 10 मेरे पास। और उसमें मैं उसका स्लरी और काउडंग और यूरिन ये मैं बायोगैस में डाल रहा हूँ। और बायोगैस में एनारोबिक क्लाइमेट में वो मैं लैक्टिक एसिड माइक्रोऑर्गेनिज्म से वो डाइजेस्टिंग कर रहा हूँ। और डाइजेस्ट होने के कारण उसका पीएच ये 8.3 जाता है। और उसमें एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है। तो एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें मैं मेजरली हिस्लरी में ट्राइको विरेल्डी पैसिलो सुडोमोनास मैड्रिज्म इसमें बहुत सारा हमको उसका अच्छा स्ट्रेंथ मिला है। और ये बबलिंग इधर दिखा रहा है। ये इंडिया का पहला स्लरी फर्मेंटर हम बोलते हैं। क्या मैं 6-7 साल से इस फर्मेंटेशन के लिए काम कर रहा हूँ। इसमें ये 10,000 लीटर का टैंक है। ये नीचे से स्लरी ले रहे और हाई प्रेशर से इधर अंदर डाल रहे इसमें। तो ये पूरा 6 दिन में 6 तास एरेशन होने के बाद इसमें 5 ppm डिजोल्व ऑक्सीजन हो जाता है। और ये डिजोल्व ऑक्सीजन के कारण ये हम स्लरी बगीचा में पर एकड़ 500 लीटर पर एकड़ हम डाल रहे हैं। और ये मेरा खुद ने मॉडिफाई किया हुआ ये स्लरी टैंक है। इसके पीछे मड पंप है 1440 आरपीएम का। और उसका 5 HP का है। उसका इनलेट और आउटलेट 3 इंच है। तो इस वजह से ये स्लरी सक करके बगीचा में डाल रहे हैं। और ये स्लरी डालने के लिए मैंने डिजाइन किया हुआ टैंक है। इससे हम पूरा खेती के लिए स्लरी डाल रहे हैं। इस साइड से हम दोनों साइड से इधर स्लरी स्प्रे कर रहे हैं इस साइड से। तो हमारा पहला ऑर्गेनिक कार्बन मैं खेती करने लगा तब 0.4 था। अभी हमारा ऑर्गेनिक कार्बन 1.9 के अबव है। तो हमको उसमें स्लरी के वजह से उसमें ऑर्गेनिक मैटर में सबसे ज्यादा हमको इम्प्रूव मिला। और ये उसमें 0.04 था ऑक्सीजन लेवल स्लरी का। वो हमारा इस इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया। और ये हम वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करें। और साल में एक बार पूरा खेती के लिए हम वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं। और ये मेरा पर्सनल वेदर स्टेशन है। ये इसमें से हमको अगला 10 डेज का प्रिडिक्शन दिखाता है। और मेजरली इसमें लक्स सेंसर है इस साइड से। और ये रेन गेज है। और ये सोलर पैनल है। और इधर ह्यूमिडिटी है। ये इसमें 10 पैरामीटर्स हमको दिखाता है। हम ये 2015 से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरा करंट का फोटो है 6 सितंबर का। तो हमारे उस दिन 50 mm बारिश हुई थी 1 आवर में। तो उसका डेंसिटी हमने इधर निकाला था कितना डेंसिटी है उसका स्पीड कितना है बारिश का। इस वजह से हम हमारे सॉइल में सॉल्ट वॉश आउट हो रहे क्या उधर रुक जाते इसके बारे में हम उधर ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ये मेरे पूरा मेरे फार्म पे ये सेंसर यूज कर रहे हैं। ये सॉइल पीएच सेंसर है। ये सॉइल ईसी सेंसर है। ये वाटर
TDS सेंसर है, वाटर EC सेंसर है, pH सेंसर है, ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन सेंसर है, लक्स सेंसर है, pH सेंसर और ब्रिक्स। और ये इसमें मूवेबल 10 सेंसर है, एयर स्पीड, एयर डायरेक्शन, ETC। और ये मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ इस डेल्टा ग्राफ के लिए। और ये ET गेज है, इंडिया का पहला इंपोर्टेड ET गेज है, इवापोरो ट्रांसपिरेशन। तो हम इसके वजह से हमारा खेती में 35% वाटर लॉसेस कम हो गए। और इसमें से हमको अभी हम 3000 लीटर पर डे पर एकड़ इतना पानी दे रहे हैं ग्रेप्स के लिए। और ये डेल्टा टी क्या, ये डेल्टा टी से हम एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड में हम 35% हम उसका लॉसेस हमने रिकवर किया। इसमें से अभी मैं एक दिखाना चाहता हूँ, इधर हमारा मिनिमम ह्यूमिडिटी है 45 और टेम्परेचर है 25। तो इधर येलो लाइन में मैच करते हम 45 ह्यूमिडिटी आने तक हम स्प्रे नहीं लेते। तो ह्यूमिडिटी आने के 45 ह्यूमिडिटी आने के बाद ही हम स्प्रे लेते। तो ये हमारा लास्ट ये अभी लास्ट पोमोग्रेनेट का ये इमेज है, ये रात का 11 बजे का इमेज है। और इसमें हम पर एकड़ 200 लीटर पानी स्प्रे करता हूँ। इसका माइक्रोन साइज ये 25 माइक्रोन साइज तक इसकी ड्रॉपलेट साइज है। और ये लिप पे 10 मिनट तक वो दवा हमारा रहता है, वो पूरा सिस्टमिक काम करता है। और इस वजह से हमारा इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड और PGR का उसका 35% हमारा खर्चा में हमारा बचत हुआ। और ये हमारा करेला का फोटो है, ये भी रात का 9:30 का फोटो है। हम 45 ह्यूमिडिटी आने तक वेट करते और उतना ह्यूमिडिटी आने के बाद ही हम स्प्रे करते। तो उसमें हमारा पर एकड़ का एग्जांपल हमने हम स्पिनोसाइड स्प्रे कर रहे, तो कम से कम वो 17-18 और 100 रुपीज का वो दवा हम पर एकड़ स्प्रे करते। उसको ह्यूमिडिटी नहीं देखेंगे हम, तो उसका वो 35% लॉस हो जाता है। तो इस वजह से हमारा वो पूरा एक स्प्रे के लिए कम से कम 500 से 700 रुपए लॉस हो जाता है। बस परफेक्ट टाइमिंग देख के हम स्प्रे करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा हमको उसमें कॉस्ट लॉसेस हम बच जाता है। ये प्रैक्टिस में पिछला 10 साल से मैं रात का नाइट स्प्रे करता हूँ। और ये 2006 का फोटो है, ये हमने अंडरग्राउंड ड्रिप डाला है। बेड पे 2 ड्रिप है और इसका डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर के लिए 1.6 लीटर पर आवर। बेड पे 2 लैटर है और एक बीच में एक अंडरग्राउंड है। कि हम टेस्टिंग के पर्पज से हम ये ओपन करके ये चला के और इससे मिट्टी से हमने अंडरग्राउंड किया। 2006 में पहला इंडिया में ग्रेप्स के लिए अंडरग्राउंड ड्रिप मेरे फार्म पे मैंने किया हुआ है। अभी मेरे 20 एकर्स ग्रेप्स को पूरा 100% सब सरफेस इरिगेशन है। इसमें हमारा 45% तक हमारा वाटर लॉसेस बच जाता है। तो सबसे ज्यादा ये वाटर लॉसेस से भी हमारा ये माल हार्वेस्टिंग का बाद का फोटो है, ये इंस्टॉल करते समय। और ये हमारा 10 फीट बाय 6 फीट का इसका डिस्टेंस है। तो हम ग्रेप्स में हर स्क्वायर फुट में एक बंच रखते हैं। तो हम पूरा उतना इरिगेशन उतना रूट जोन एक्टिव नहीं करते हर स्क्वायर फुट पे। जनरली हम बाकी फार्मर बस 10 स्क्वायर फुट या 20 स्क्वायर फुट ही एक्टिव करते। तो हम ये इधर 20 स्क्वायर फुट ये बीच में अंडरग्राउंड लैटर से करते, इस साइड का लैटर से 20 स्क्वायर फुट करते और इस लैटर से 20 स्क्वायर फुट करते। तो हमारा 60 स्क्वायर फुट हमारा पूरा इरिगेशन हो जाता है 60 स्क्वायर फुट पर प्लांट्स में। तो इस वजह से हमारा कम से कम पानी में हमारा यील्ड पर प्लांट 9 से 10 kg हमारा बढ़ गया।
और ये हार्वेस्टिंग के टाइम का ग्रेप्स का फोटो है। ये हमारा इतना ट्रेस देते हैं और ये ट्रेस हम ब्रिक्स बढ़ाने के लिए देते हैं। एक्सिस नाइट्रोजन उसमें से लॉस हो जाता है और उसमें बेरी अटैचमेंट बढ़ता है। ये सब हम ईटी ऑब्जर्व करके यूप्रो ट्रांसपिरेशन ऑब्जर्व करके हम इसमें ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं और हमारा हार्वेस्टिंग कीपिंग क्वालिटी उसमें सबसे अच्छा हो जाता है। इसमें कोल्ड स्टोरेज कीपिंग क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम ये इसमें इतना ट्रेस या बाकी मल्चिंग पेपर हम इस्तेमाल करते हैं। और ये मेरा सॉइल ईसी है। ये सॉइल का इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी इसमें से हम ईसी कंट्रोलाइज फर्टिगेशन करते हैं। हमारा पूरा सॉइल में 1.5 इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर सॉइल ईसी हम यूज करते हैं। और ये हमारा स्लरी और काऊ डंग का स्लरी है बायोगैस फर्मेंटर करके। इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल हमने बढ़ा लिया है। ये फिल्टर करके हम ये पूरा इसमें फिल्टर करने के बाद कि इसमें सेंसर करते हैं और इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल चेक करके ये हम हमारे फार्म पे हम देते हैं। और ये इधर आरओ प्लांट हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे पास 2500 तक टीडीएस होता है। कोई भी पेस्टिसाइड हम स्प्रे करते तो उसका रिजल्ट बस ओनली 50% ही रिजल्ट मिल जाता है। तो 50% रिजल्ट मिलने के बाद तो हमको नंबर ऑफ स्प्रे बढ़ जाता है। नंबर ऑफ स्प्रे बढ़ने के बाद हमारा डिटेक्शन लेवल सबसे ज्यादा आ जाता है। तो डिटेक्शन लेवल आने के बाद हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या अभी वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल स्प्रे होने के बाद अभी वो बहुत सारी दिक्कत आ गई। कॉस्ट लॉसेस भी है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी सबसे ज्यादा है। वो हमने वाटर मैनेजमेंट वो आरओ सिस्टम पे हमने रिकवर की। इस साइड ये भी इधर देख रहे हैं तो इधर अंडरग्राउंड ड्रिप है। इधर ये 2006 में अंडरग्राउंड किया हुआ है और ये अभी हमने बीच बीच में वो टेस्ट करते रहते हैं उसका एक्टिविटी कैसा चल रहा है। और ये बाकी हमारा फार्म पे हमने वो एक्सपेरिमेंट किया है वो हमारा शेयरिंग रहता है। और अभी इसमें भी हम हमारा स्लरी से ट्राइको पैसिलो मैट्रिज्म ये हमारे खुद के स्लरी से हम वो आइसोलेट करके आइडेंटिफाई करके हम ग्रो करते। ये मेरे फार्म लैब पे ये इधर शेकर है, इधर बर्नर के आगे से वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं और ये पूरा हम इसका इस्तेमाल हमारे खुद बगीचा के लिए हम करते हैं। ये मेरा लास्ट ईयर पोमोग्रेनेट का प्लांट है। ये 20 अगस्त को हमने हार्वेस्ट किया था। इसमें पर एकड़ 10 टन एवरेज साइज था। 300 ग्राम्स के आगे इसका एवरेज साइज था। ऐसा हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है बगीचा में। और सॉरी अभी हमको टाइम लिमिट कम होने के कारण मैंने थोड़ा फास्ट दिखाया। तो कोई बात नहीं। इस तरह थैंक्स मुझे खेती में मेरे एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए आपने ये चांस दिया। थैंक यू सर। Thank you. Just a few seconds. We all know that in Nashik grapes as well as the pomegranate, farmers are well advanced. I've seen them before 15 years, and they are very cooperative. They have groups, farmer groups, to help in the disease with a cell phone, WhatsApp, and I think excellent. I think such farmers probably even if they have one person in Maharashtra, the whole scenario in Maharashtra will change. So I'll request him to have a group of farmers to train. Let's Dr. Gorantiwar, probably we can go for the next farmer, please. Yes, thank you very much. मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो रसा साहब है उन्होंने जो ग्रेप के बारे में बताया है, लेकिन अगर मान लो हम उनके खेती में गए थे तो करेला भी था और उसमें भी वो इसी किस्म की एडवांस खेती करते हैं। तो थँक यू रसाळ साहेब. आमचे आता जे नंतरचे जे शेतकरी आहेत, निकम साहेब तुम्ही आहेत तयार?
सर मी त्यांच्यासाठी मी शेअर करतोय स्क्रीन. वैभव, हा ओके. येस सर. वैभव, तुम्ही निकम साहेबांची 1-2 मिनिटात ओळख करून द्या ना. ओके. डॉक्टर रविंद्र निकम ये मासला डिस्ट्रिक्ट जलगांव से बिलोंग करते हैं. हम एक प्रोग्रेसिव फार्मर है और आज उनका जो टॉपिक उनको दिया था वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम विद एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंटरवेंशन था. वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उसके साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं. लाइक दिस वो इंटर क्रॉप जो होते हैं मल्टी क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम भी है, वो करते हैं. फार्मर्स एग्जीबिशन उनके फार्म पे होते हैं, बहुत सारे फार्मर्स एग्जीबिशन वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. बहुत सारे फार्मर्स को भी वो गाइड करते हैं. फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के भी वो एक डायरेक्टर है और साथ ही में वो नर्सरी मैनेजमेंट या नर्सरी ग्रोइंग के लिए पॉली हाउसेस भी उनके पास है और टर्मरिक प्रोसेसिंग का यूनिट भी है. तो इस तरह से वेरियस एक्टिविटी वो उनके पास है. तो मैं निकम सर की स्लाइड मैं शेयर करता हूँ. ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर वैभव सूर्यवंशी. या निकम सर प्लीज अनम्यूट करा. निकम साहेबांपर्यंत आवाज चाललाय का? निकम सर अनम्यूट करा. सुनील सर त्यांना फोन करून सांगा, नाही तर फोन करून सांगा. हॅलो हॅलो, आवाज येत आहेत निकम साहेब, सांगा. ओके ओके. आज के कार्यक्रम के शुभ मुहूर्त पे डॉक्टर गजेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रशांत कुमार, डॉक्टर महेंद्र सर, डॉक्टर गोरंटीवार सर, डॉक्टर नलावड़ी सर, डॉक्टर शिंदे सर और हमारे फार्मर राहुल जी रसाड़, संदीप भोले जी. मैं डॉक्टर रविंद्र निकम, आपको लगता होगा ये कभी ह्यूमन डॉक्टर में था, अभी मैं खेती का डॉक्टर बन गया है. नेक्स्ट सुनील साहब, नेक्स्ट. ये मेरी खेती में के कुछ प्रयोग है. नेक्स्ट. ये लेफ्ट साइड पे जो दिख रहा है वो मल्चिंग पे वाटरमेलन, और सेकंड जो फोटो है उसमें पपीता इंटरक्रॉप वाटरमेलन. ये जो खेती में कुछ प्रयोग किया मैंने, शुगर का इंटरक्रॉप ग्राम, उसमें ड्रिप इरिगेशन पे मेरे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें जो फार्मर्स लोग वो देख रहे हैं. ये नीचे आप देख रहे हैं वाटरमेलन इंटरक्रॉप बनाना एक ज्यादा ड्यूरेशन का आता है, इसलिए हम शॉर्ट ड्यूरेशन में 60 दिन में पैसा मिल जाए इस हिसाब से हम कर लेते हैं. साथ में बनाना बेड पे लगाते, मल्चिंग पे लगाते. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ये फार्मर्स लोग जो विजिट किया ड्रिप इरिगेशन पे, ये सोइंग किया हुआ मेज ट्रैक्टर ऑपरेटेड और उस पे ड्रिप इरिगेशन, ये ग्राम और मेरीगोल्ड और उसमें गौवा पेरू, 3 क्रॉप पैटर्न, 3 पिकों में एक खेती में 3 क्रॉप, और उसको हम जो बोलते हैं सापड़ा पिक, वो पिक के हिसाब से मेरीगोल्ड, ग्राम और गौवा. सेकंड में मेरीगोल्ड और चना. ये जो आप दिख रहे हैं बनाना और शीशम इंटरक्रॉप. धूप में जो हमारे तरफ टेम्परेचर 45-46 हो जाता है जलगांव में, तो हमको बनाना लगाना मुश्किल हो जाता. वो हिसाब में हम मार्च अप्रैल में जब बनाना लगाए तो हम इंटरक्रॉपिंग कर लेते उसमें शीशम से. उसमें प्रोटेक्शन भी मिल गया और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो जाता. हवा में जो नाइट्रोजन रहता वो फिक्सेशन हो जाता और आखिरी में बायोमास भी हो जाता, और हमको शॉर्ट ड्यूरेशन में बनाना में वो इल भी आ जाता. नेक्स्ट. निकम साहेब, नेक्स्ट. व्हिडिओ बंद केला तरी चालेल. ओके ओके. ये मेरे इंस्ट्रूमेंट है, ट्रैक्टर ऑपरेट, बैल ऑपरेट, और ये मेरा डेयरी फार्मिंग
डेयरी के हमारे देशी गाय है, उससे हम जीवामृत का यूज करते हैं। और उसमें जो हमारा डेयरी फार्म है उसमें पानी के लिए उनको बाउल बैठा है, उसमें ऑटोमेटिक से पानी आ जाता है। उसमें हरदम एक एक कंटिन्यू लेवल रहती है। पानी पिलाने के लिए गायों को छोड़ना नहीं है, उसके हिसाब से वो गाय पीती रहती। ऐसा है हमारा डेयरी फार्मिंग। और उसको मिल्किंग मशीन से हम दूध निकालते हैं और उसका जो गोबर है उसका हम जीवामृत के लिए यूज करते हैं, यूरिन और गोबर का। ये हमारा जो शेडनेट हाउस दिख रहा है वहाँ हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की विजिट हुई थी। उसमें हम वाटरमेलन के पौधे बना लेते हैं वाटरमेलन लगाने के लिए। उसमें पौधे बनाने से हमारे 20 या 25 दिन इधर जो खेती में लगाना है, 20-25 दिन में हम वाटरमेलन के रोप उधर शिफ्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट। ये मेरा वर्मी कंपोस्ट 2002 से एग्रोवेस्ट से बेस्ट ऐसा। ये हमारा जो इधर सब एग्रीकल्चर ऑफिसर की विजिट हुई थी, इसमें एग्री वेस्ट जो है उससे हम सब खाद बना लेते हैं। इकोनॉमिकल कम खर्चे में मैंने वो 2002 से चालू किया, वो आज तक चालू है। उसमें वाटर मैनेजमेंट और फोगर्स बैठा है मैंने, उसमें फोगर से पानी मिलता। और ये जीवामृत फिल्टर सेकंड फोटो में आप देख रहे हैं, जीवामृत फिल्टर वो हमने खुद हमने बनाए हैं। तो कम खर्चे में 15,000 में जीवामृत फिल्टर ऑटोमेटिक, उसमें जो सिस्टम बनाई है उससे जीवामृत ड्रिप से हम छोड़ सकते हैं, ऐसी उसमें सिस्टम हमने बनाई है। ये आप बाद में जो देख रहे हैं नर्सरी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप, ये मैंने 2012 में टेरेस नर्सरी बनाई है। टेरेस नर्सरी घर के गच्ची पर 40 फीट ऊंचाई पर, उसका मेरे को फायदा ऐसा हुआ, इतनी ऊंचाई पर सकिंग पेस्ट नहीं जा पाते, इसलिए वो जो अपन रोप बनाते वो टाइम में अपने को पेस्ट कंट्रोल का कुछ खर्चा नहीं होता और सुरक्षितता होती। जब मैंने 2012 में से मैं रोप बना रहा हूँ, पहले मैंने टेरेस नर्सरी पे बनाए। बहुत सारे हमारे इधर जलगांव में टेरेस नर्सरी का एक बहुत सारा लोग बना रहे हैं। नेक्स्ट। मेन क्रॉप जो हमारा है केली, ये बनाना एक्सपोर्ट की प्रैक्टिस में 5 साल से कर रहा हूँ। उसको जब वो केयरफुल ऊपर आ जाता है उसको बर्ड इंजेक्शन हम बोलते हैं। बर्ड इंजेक्शन के लिए इमिडाक्लोप्रिड 8 ml 15 लीटर वाटर में हम उसको बर्ड इंजेक्शन करते हैं। उसके बाद में कुछ सकिंग पेस्ट के लिए स्प्रे देना होती है, 2-3 स्प्रे हम देते हैं। उसके बाद में हम स्कर्टिंग बैग लगाते हैं। स्कर्टिंग बैग 2 टाइप की होती है, पॉलीथीन और नॉन ओन फैब्रिक्स। एक पॉलीथीन बैग जब ठंड रहती है जब हम यूज करते हैं, नॉन ओन फैब्रिक्स का जो है वो बरसात के दिन में हम यूज करते हैं। इससे मैच्योरिटी 15 से 25 दिन तक जल्दी आ जाती है। स्पॉटलेस बनाना एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाना बन जाता है। ग्राहक सर ने मेरे प्लॉट में विजिट दिया था, फार्मर लोग भी प्लॉट को विजिट देने को आए थे। और एक्सपोर्ट बनाना में उसका डायमीटर 38 to 44 कंट्री के हिसाब से चलता है। लेंथ उसकी 7.5 इंच to 8 इंच का बनाना वो लगता है। जो कंट्री में बनाना जा रहा है उसका ड्यूरेशन कितना है कंटेनर पहुंचने का, वो हिसाब से उसकी मैच्योरिटी रहती है। ज्यादा लंबा दूर तक बनाना जाना है तो उसका 38 डायमीटर होना चाहिए। और ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन का उसका ट्रैवलिंग है तो 40 to 44 डायमीटर का बनाना चलता है। ऐसी बनाने की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अभी बनाना एक्सपोर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये हमारा टर्मरिक, ये जो पहला फोटो में दिख रहा है जहाँ 2 लेडीज खड़ी है, वो बॉयलर है, टर्मरिक बॉयलर। हम ऑर्गेनिक हल्दी करते हैं, वो खेत में ही लगाई जाती और उसमें बॉइलिंग जो है प्रोसेस यही होती। सेकंड फोटो जो देख रहे हैं आप राइट साइड में, वो ग्रेडर है हल्दी की क्वालिटी ग्रेडिंग करने के लिए। बाद में हमारा ब्रांड है अन्नपूर्णा हळद पाउडर,
ये पैकिंग करके हम रिटेलिंग और होलसेलिंग करते हैं। टर्मरिक हम हमारी खेती में ड्रिप इरिगेशन पे करते हैं। सेलम वैरायटी और ऑर्गेनिक पाउडर का सेल हम करते हैं। नेक्स्ट। वाटरमेलन पहले फोटो में जो देख रहे हैं ये बहुत पुराना फोटो है। हमारी खेती जो है अंकलेश्वर बुरहानपुर हाईवे पे है। अभी काश्तकार का तो खेती में पकाना आसान है, लेकिन बिक्री व्यवस्था ये जरूरी हो गई है। हमको जो दिक्कतें आ रही, बिक्री में भी दिक्कतें ज्यादा आ रही है। वो हिसाब से हाईवे पे स्टॉल लगा के वो येलो मिलन जो दिख रहा है विशाला कंपनी का येलो मिलन है, और हाईवे पे हम स्टॉल लगा के बेचते थे और बेच रहे। सेकंड फोटो भी महाबीज का स्वीट पैशन ऑर्गेनिक वाटरमेलन, एक जिसकी जंबो साइज 10 किलो मिनिमम टू 15 केजी इतनी बड़ी उसकी साइज थी। स्वीट पैशन वैरायटी वो थी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये फॉरेनर्स विजिट मेरे खेत में हुई थी। ओनियन फार्मिंग, व्हाइट ओनियन जैन इरिगेशन फार्मिंग का आदरणीय भवराल बहु जैन का मैं 2002 से कर रहा। उसका पहला ही अवार्ड मेरे को मिला था। ओवरहेड स्प्रिंकलर पे रेन स्प्रिंकलर पे मैंने एकड़ में 18 टन ओनियन, व्हाइट ओनियन का उत्पादन लिया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और ये जो सब दिख रहे हैं मेरे पेपर में आए हुए सब फोटो हैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट के, सब वार्ताहरों ने दिया हुआ। हे जे देख रहे हैं आप, शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावणे हेच भवरलाल भाऊचे ध्येय मेरा हेडिंग। आपके ये फोटो दिख रहे गलाक साहब और हमारे महात्मा कृषि विद्यापीठ राहुरी के ममराबाद में जब शास्त्रीय सलाहकार समिति की बैठक हुई थी, जब डॉक्टर के.पी. विश्वनाथा साहब ने मेरा सत्कार किया था, उनके साथ में डॉक्टर केवकाटे सर भी थे। और ये केवीके में इनोवेटिव फार्मर का मेरे सत्कार करते हुए मैडम रूरल अग्रवाल, जिलाधिकारी जलगांव, ये मेरे सब अवार्ड आज दिन तक मैंने जो काम किया उसके मेरे को अवार्ड मिले हैं। ये सब अवार्ड आप देख रहे हैं। थैंक यू। हरित क्रांति में जैसे नया बीज, रासायनिक खाद, टिश्यू कल्चर, ड्रिप सिस्टम से हरित क्रांति हुई, वैसे ही मैकेनाइजेशन एक क्रांति होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। हम चल रहे हैं और मैकेनिज्म के हिसाब से भविष्य में ये बहुत ही क्रांतिकारक होगा। मैकेनाइजेशन जरूरी है। मल्चिंग लेइंग मशीन हमने खरीदा है। मल्चिंग लेइंग मशीन में खुद हम पेपर डलवाते हैं, उसमें वाटरमेलन और बनाना लगाते हैं और वो रेंटल पे भी हम देते हैं। हेलो, आवाज आ रहा था? हाँ हाँ येत आहे सर माझा वेळ संपला असेल तर बंद करू? चालेल चालेल, हो बंद करा. धन्यवाद धन्यवाद. ओके, थँक्यू सर, थँक्यू. धन्यवाद. थँक्यू. Thank you, Dr. Gorantiwar. Continue with the next one. थँक्यू निकम साहेब. तुम्ही एक व्यवस्थित फार्म मेकॅनायझेशन आणि अगदी तुम्ही क्रॉपिंगच्या बऱ्याचशा सिस्टीम्स IFS मध्ये तुम्ही कसा काय वापर करता ते सगळं सांगितलेलं आहे. आणि आपण सकाळी चर्चा केल्याप्रमाणे आम्ही तुमच्या शेताला आम्ही आमच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे वैज्ञानिक भेट पण देतील. आजच्या सत्रातलं आखिर का प्रेजेंटेशन जो है उसके लिए मैं मिस्टर संदीप भोले साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और वो गन्ना और प्याज के बारे में नाम ले लेगा आपने. और ये जो किसान है वो पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो दौंड तहसील है वहां से पाटस नाम का एक गांव है, वहां से आते हैं. संदीप भोले साहेब. आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज येत आहे तुमचं. हाँ सांगा तुम्ही. सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार. मैं संदीप भोले पुणे जिले के पाटस गांव का रहने वाला हूँ. मेरी 12 एकड़ जमीन है. मैं उस जमीन में गन्ना और प्याज की खेती करता हूँ. डॉक्टर वनय जी, डॉक्टर जमादगिरी जी, डॉक्टर संजू माने जी ये मेरे गुरु हैं. मेरी अपनी खेती में मैंने पहला प्रयोग किया था सुपर केन नर्सरी का. लगभग मैं 4 साल से सुपर केन नर्सरी तैयार करके उसका रिप्लांटेशन अपनी खेती में करता हूँ. कम समय में और कम खर्च में
अच्छे किस्म के गन्ने के क्रॉप हम तैयार करते हैं। लगभग 500 किलो गन्ने में उसका लग जाता है। नाही, गोळे साहेब माईक जरा जवळ घ्या, आवाज कमी झालाय. हॅलो, माइक थोड़ा जवळ घ्या. हाँ, जोरात बोला. जोरात बोला. हो, लगभग 500 किलो गन्ना उसमें लग जाता है. बाकी किसानों को गन्ना लगाने के लिए 1.5 या 2 टन तक गन्ना लगता है. तुमचा आवाज बहुतेक येत नाही आहे. तुमचं हायलाइट पण होत नाही त्याच्यामुळे. तुम्ही तुमचं प्रेझेंटेशन आहे ना तुमच्याकडे, ते सुरू करा. म्हणजे मग प्रेझेंटेशन तुम्ही सुरू केलं तर तुमचं हायलाइट होईल. प्रेझेंटेशन शेअर करता का तुम्ही? नाही, मी फक्त असं फोटो काढतात, फक्त फोटो काढले. अच्छा, मग त्यांना हायलाइट कर. पोस्ट प्लीज हायलाइट हिम. त्यांना हायलाइट करावं लागेल. त्यांची लॅपटॉप मध्ये ना सर व्हॉल्यूम वाढवायला सांगा जरा, किंवा मोबाईल असेल तर त्याच्यात व्हॉल्यूम वाढवा म्हणा. हॅलो, अब आ रहा है आवाज? हाँ, येत आहे, आता येत आहे. हाँ, बरोबर. हाँ, तो सुपर के नर्सरी तैयार करके रिप्लांटेशन अपनी खेती में करता हूँ. कम समय और कम खर्च में अच्छे किस्म के गन्ने के क्रॉप हम तैयार कर सकते हैं. लगभग 500 किलो गन्ना उसमें लग जाता है मुझे. बाकी किसानों को तो गन्ना 2 टन 2.5 टन इतना लग जाता है. सुपर के नर्सरी तैयार करने को अपने पास रासायनिक खाली थैली रहती है. उसको जमीन पर बिछाकर उस पर थोड़ी मिट्टी डाल दी जाती है. तो मैं फोटो में आपको दिखा रहा हूँ. इधर ऐसे नीचे मिट्टी डाल दी जाती है, उस पर थोड़ी खाली गोनी डाल दी जाती है. उस पर हम जो गन्ने के कट टुकड़े करते हैं आग वाले, तो उस पर हम रखते हैं. उसके बाद हम एक एक कट करके उस पर रख जाते हैं. थोड़ी उस पर फिर मिट्टी डाल दी जाती है, और उस पर मिट्टी डालने के बाद स्प्रिंकलर लगाने के पानी के छिड़काव किया जाता है. इस तरह 21 दिन के बाद गन्ने का वो क्रॉप हम आप दूसरे खेत में हम रिप्लांटेशन का करते हैं. रिप्लांटेशन के समय 2 क्रॉप में 4.5 और 1.5 फीट का अंतर रखा जाता है. मेरे गन्ने की खेती में ड्रिप इरिगेशन और रेनगन इरिगेशन द्वारा मैं उसकी सिंचाई करता हूँ. ये फोटो दिखा रहा है, ये रेनगन सिंचन है. मैं अपनी शुगर केन को ऐसे रेनगन सिंचन से अब सिंचाई करता हूँ. उसके द्वारा मुझे पानी की बहुत बचत हो रही है. इस माध्यम से गन्ने को जितना पानी जरूरी है उतना हम उसको दे सकते हैं, और हमारी जमीन और अपनी जमीन खराब होने से बच जाती है. कौन सा भी बीज हो, हम तोल माप के उसको बुआई करते हैं. गेहूं या प्याज का बीज हो, हम उसको तोल माप के उसको बुआई करते हैं. जो कुछ खाद देते हैं उसको भी हम तोल माप के देते हैं. प्रॉपर कोई स्प्रे करना हो तो भी हम उसको तोल माप के करते हैं. लेकिन मेरे हिसाब से हम पानी को कभी जमीन को मोल ताप से नहीं दे रहे. तो जमीन उसके अनुसार वातावरण के बदलाव ये देना चाहिए. ये सब हम ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेनगन द्वारा हम उसको कर सकते हैं. अब मैं प्याज के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा. जो मैं प्याज का बीज बनाता हूँ उसके सिलेक्शन मेथड का उपयोग करता हूँ. अच्छे किस्म के गोल आकार के डबल पत्ती वाले ऐसे प्याज के सिलेक्शन मैं करता हूँ. ये जो आप देख रहे हैं फोटो में, ऐसे किस्म के मैं कांदे का प्याज का सिलेक्शन करता हूँ, और उसके द्वारा ही मैं उन्हीं का बीज बनाता हूँ. वो सिंगल उसकी गर्दन काटने के बाद उसमें एक ही सर्कल होना चाहिए. जिसमें के प्याज हम बीज तैयार करना चाहते हैं, ऐसा ही बीज मैं तैयार करता हूँ. इसमें बीज तैयार करने के बाद प्याज की नर्सरी में तैयार करता हूँ. उसकी जर्मिनेशन भी बढ़ जाती है और उसका उत्पादन भी बढ़ जाता है. प्याज को हम स्टोर करते हैं तो बहुत दिन तक वो खराब नहीं होता, और साइज अच्छे होने के कारण मार्केट को उसका रेट भी ज्यादा मिलता है. लगभग 18 से 20 टन पर एकड़ पर उसका एवरेज मिल जाता है. ये सब अच्छे होने के लिए हमें जमीन अच्छी बनानी पड़ेगी, सेंद्रीय खाद ज्यादा से ज्यादा डालने पड़ेंगे, शुद्ध बीज तैयार करना पड़ेगा, रासायनिक खाद सही मात्रा में हमको देना पड़ेगा, इस्तेमाल करना चाहिए, ड्रिप स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना चाहिए. तभी हम कम खर्च में ज्यादा प्याज का उत्पादन ले सकते हैं. अब स्टोर के बारे में थोड़ा बोलूंगा. प्याज का अच्छे से उत्पादन लेने के बाद अगर मार्केट में रेट कम हो तो हम उसको स्टोर करना चाहिए, और वही स्टोर अच्छी तरह का होना चाहिए. बारिश, धूप और प्याज का बचाव होने के लिए इसकी जरूरत है. इसलिए हमें आधुनिक तरह से वो प्याज के लिए स्टोर बनना वो जरूरी है. वो जगह थोड़ी ऊंचाई पर होनी चाहिए,
चारों तरफ से हवा अंदर आनी चाहिए। एंगल और पतरे का इस्तेमाल हम उस स्टोर में बनाने कर सकते हैं। 5 फीट ऊंचाई, 4.5 फीट उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई हम 7 फीट तक रख सकते हैं। क्या स्टोर करते समय हम उसके अंदर डालते हो तो उस पर सल्फर और क्लोरोपाइरिफॉस पाउडर का हम छिड़काव कर सकते हैं और वो सुरक्षित रह सकती है। ये जो फोटो दिखा रहा हूँ मैं, ये पैक स्टोर, चारों तरफ से उस पर अंदर हवा जाती है और वो अच्छी तरह से हम उसको रख सकते हैं। तो ऐसा करने पर हम खेती में और बढ़ाव ला सकते हैं। 10 टन प्याज के लिए 1 किलो सल्फर, 1 किलो क्लोरोपाइरिफॉस पाउडर, आधा किलो ये प्रमाण रकम रख सकते हैं। ऐसा करने के बाद हम अच्छी तरह से प्याज रख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं आप। मेरा मोबाइल नंबर है 9604709751। धन्यवाद। धन्यवाद संदीप भोळे साहब। डॉक्टर हमारी तरफ से 6 प्रेजेंटेशन हो गए हैं। Yeah, now I think we'll put the floor for question answer. There are a lot of formers, so I think Dr. Narendra and you, Dr. Gorantiwar, can coordinate the session with question and answers, please. Others have questions, you can ask me. डॉक्टर शहा, आपण कोऑर्डिनेट करता हा, म्हणजे तुम्ही पण आणि म्हणजे जर त्यांनी रेज हँड कुणी केले असतील, मला कुणी अजून रेज हँड दिसत नाहीयेत, तर जर कुणी हात वरती केलेला असेल तर वी कॅन सॉर्ट ऑफ आय थिंक आय सॉ अ क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर अतुल मोहोड ऑफ दापोली युनिव्हर्सिटी. ही हॅड अ क्वेश्चन टू मिस्टर रसाळ. So, Dr. Atul, you want to ask a question to Mr. Rasar? Dr. Atul, did you have a question to Mr. Rasar? Sir, you can read that question directly, otherwise. Should I? Actually, Atul wants to know. रसाळ साहेब, तुम्हाला एक प्रश्न आहे त्यांच्याकडून की तुमचा जो डाटा आहे तो तुम्ही एक्सपर्ट ऍडवायझरीना पाठवता की तुमचं डिसिजन जे आहे तुम्ही ज्याच्यावरती निर्णय जो घेता तो स्वतः घेता का, असा त्यांचा प्रश्न आहे. तर मी गेले 6 ते 7 हम पिछले 6 से 7 ईयर से हम वेदर टेस्टिंग इंस्टॉल किया हुआ है. इस वजह से हमारा उतना एक्सपीरियंस हमको आ चुका है, तो हम वो पूरा डिसीज मैनेजमेंट रहने दो या कोई डेल्टा का रहने दो, हम डिसाइड करते हैं. और उस अभी एग्जांपल या हमारा अभी हम डाउनी मिल्ड्यू के लिए प्री डालते हैं. तो ये सब हमारा खुद का हम ऑब्जर्वेशन करके, और हमने वो पूरा अभी मेरा वेदर स्टेशन में अभी पूरा 7th ईयर का पूरा डाटा सेव है. पिछले साल का जो हर 5 मिनट्स में इंटरवल में वो डाटा हमारा सेव हो रहा है. हम खुद उसका ऑब्जर्वेशन लेके हम डिसीजन लेते हैं. धन्यवाद रसाळ साहेब. एक प्रश्न है डॉक्टर ए कैरोलिन, ICR IHR Bangalore. You have raised hand. You can ask your question. Good evening, sir. My question is to head farm machinery. Okay. Sir, I would like to know the belt type planter for which crop it is being used. We are using that bell type planter for vegetable crops. We have tested it for onion, and now we are also testing it for soybean. We have tested, and other vegetables we are still testing it, and we are working on a few other things with it so that it can be converted into small nursery planters. That is ongoing project. So, but it is effective for all vegetables. It is very good innovation. It is actually the first prototype was from Stanhen, and Stanhen National is the company which is providing this type of equipment in India. Thank you, Dr. Thank you, sir. Thank you, Dr. Sachin.
एक संदीप घोले, आपको एक सवाल आया है कि ये डबल पट्टी ऑनियन बल्ब कैसा सिलेक्ट करते हैं? संदीप घोले जी है? He was there. He just left his seat, I think, because I heard his sound. No, he's there. He's there. He's there. He's there. घोले साहेब आहे का जवळपास तुम्ही? Anyway, he left his seat, I think. Next question. Somebody, is there any other question? Anybody else has question? I don't see any hands raised. Okay. Then I would request Dr. Gajin Singh to say a few words before we. Dr. Gajin Singh, you're available? Dr. Gajin Singh, I can see him, but yeah, he's there, but he's mute actually. Yeah. Dr. Gajin Singh? Yeah, Dr. Syed, if he's not coming in the meantime, we can request Dr. P.G. Patil to react to what technologies and their faculty and scientists are working, and I think taking the problems from the field and trying to sort of, I think this has some value in terms of extension. Of course, he put it in his remarks on vision as to sort of pick up the research problems from the field, not only from the literature review. And that is what we tell our students of technology and development as well. So Dr. Patil, you have any remarks on, how does one pick up the research problems in this domain? आज के जो 6 presentation थे, really it is a very good blend of faculty members, scientists, as well as जो हमारे किसान भाई है, प्रोग्रेसिव किसान भाई है, उन्होंने जो presentations किए, अगर हम देखें तो राहुल रसाल जी जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उनका जो आज का प्रेजेंटेशन था, मैं समझता हूँ कि बहुत ही आई ओपनर सभी जो भी आज के जो प्रेक्षक होंगे, जो भी आज देख रहे होंगे, उनके लिए है। और जिस तरीके से किसान इस फील्ड में अभी ऑटोमेशन में आ रहा है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में आ रहा है, वो एक मुझे लगता है कि एक मिसाल उन्होंने हमारे सामने रखी है। और हमारे बाकी भी स्पीकर्स थे, जैसे रविंद्र निकम जी ने जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में जो भी बताया, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से ही हमें काफ़ी हमारे किसानों की आय दुगनी या तिगनी हो जाएगी। और ये भी एक जो भी फार्मर्स आज देख रहे हैं, जो भी साइंटिस्ट देख रहे हैं, तो एक उनका भी एक रोल मॉडल बहुत अच्छा है, और उन्होंने मुझे लगता है वो उसको रिप्लिकेट करना चाहिए। संदीप घोले साहब ने भी बताया कि उसके हाउ ही इज़ मैनेजिंग द वाटर एंड अदर थिंग्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन एग्रीकल्चर। और हमारे जो भी आज फैकल्टी मेंबर है, उन्होंने हमारे विद्यापीठ में क्या रिसर्च हो रहा है उसके बारे में भी बताया। तो काफ़ी हम ऐसे जो मॉडल्स है, ये रिप्लिकेट बहुत होना चाहिए, और किसानों ने इसके बारे में अभी बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। उसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी से जो भी मदद लगेगी, जो भी हेल्प लगेगा, हम बहुत ही हमारे जो भी हमारे फैकल्टीज़ है वो हम देने के लिए भी तैयार हैं। और ओवरऑल आज का जो भी प्रेजेंटेशन था, आज जो भी वेबिनार था ऑनलाइन, मुझे लगता है कि बहुत ही फ्रूटफुल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे और वेबिनार्स इस फील्ड में जो भी अभी टाइम ऑफ आवर की जो बात है, ऑटोमेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर में, उसके लिए आगे आ जाएंगे। और ऐसे मैं देखूँगा कि आगे भी अच्छे प्रेजेंटेशन इसमें हो जाएगा, और एक अवेयरनेस पूरे कंट्री में बढ़ेगी। ये जो है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में भी नहीं होना चाहिए, ये सभी स्टेट्स में होना ज़रूरी है, पूरे कंट्री में होना ज़रूरी है। और जो भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे है वो ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे उस देने के लिए।
मैं इसी के साथ मेरे 2 शब्द में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you. Thank you, Dr. Patil. I have to thank all of you. Really, you have taken pains to come. Like you told Dr. Patil, we have started this about the last lockdown last year. There's a YouTube channel that is Automation in Agriculture. All the recordings we have, somewhere about 100 of the experts spoken throughout the India and world about in automation agriculture. And now recently we started, we'll find out from each universities. So we started with TNAU and very good response from you. And I find it difficult to get from many of the other universities. We'll try very hard to get each one to get them united. Because one of my observation is very less cooperative work is happening. I mean, they can do better job rather than what's right now happening. So that is our intention. And Dr. Gajit Singh just now called me. He could not somehow come into the line to talk. I think Dr. Mahende, sir. Yeah, Dr. Mahende, sir. I saw him somewhere. Dr. Mahende? Yes, I'm here. I'm here. Please, I'm please, listening. please. Thank you. We'll like to listen from you a few words. Oh, thank you, Dr. Syed. हिंदी में बोलो के साथ भी है? Yes, sir. Yeah, Hindi में. Anything is okay. Fine, no problem. Dr. Mahende, you have to unmute yourself. Thank you, Dr. Syed. Thank you, Dr. Patil. I think it was wonderful time that we had last few hours. MPKV Rahuri, I am closely associated with them. I think whatever presented there, I am a part of the research planning meeting. So I have seen all this work in research planning, and they have all presented and planned. I have given my input last time in research planning. So they are doing wonderful work. It's a very good team. And I'm sure that in years to come, MPKV Rahuri will be leading in the country as far as digital agriculture is concerned, precision water management is concerned, precision mechanization is concerned. I'm very impressed with the presentation by Dr. Nalawade and Dr. Gorantiwal today, that a different approach in mechanization, actually, that's what is needed. Many other people are doing, but this university is also ahead in adopting the machinery and utilizing the technology, advanced technology in automation. Dr. Shinde is expanding, doing the extension. Actually, there is no extension. Ramesh Deshpande asked a question and question and answer that where is the extension of replication of all this is happening here. Yes. So replication part in the state of Maharashtra, I think farmers are themselves doing a lot of research. You have seen 3 model farmers who have state-of-the-art technology in their farm. They're adopted and they are also extending on their own. Maharashtra has a unique system of crop growers association. Pomegranate, grape growers association, custard apple association, onion growers association. Take the cash crops and every crop has an association. These farmers bring most advanced technology from anywhere in the corner of the world and they adopt in their farm. Universities playing very pivotal role in promoting these farmers and guiding them. So there is a win-win situation. I think this region also is endowed with best of the farmers in the country. So it was very impressive that you organized this, and some of the approaches in the university. I think after the NAHIP project has come, past project, I think altogether different approach, and people are energetic, and funding is also available. Dr. Patil's dynamic leadership now, I think, will push forward development of these technologies, and also this will reach to the different farmers in the state also. I'm sure, I think this webinar has impressed many people, especially the farmers presenting in a more scientific way is an unique thing, actually, that we see. Scientists normally present in a scientific way, but farmers talking about organic carbon and fermentation and all those things they are doing in their farm, bricks, surface deep irrigation for sugarcane, supercane nursery that farmers. Sir, तुम्ही unmute झालात, sir. Mute झालात.
automatically it is happening. Automatically I am being muted by, I do not know why. Maybe signal that I should stop. No, sir. No. Thank you, Dr. Syed, and thank you all for this beautiful organization of event by ISAE, and Dr. Syed is leading all the time. I hope that other universities also come forward and make this kind of presentation. So thank you so much. Dr. Gajendra Singh is here for final remarks. Yeah. Thank you Dr. so much. Dr. Mahende, I thank you so much because in the last series you were one of the persons coming every week in our every of the program you have attended, and it made all the youngsters to come. And I'm actually trying to get Akola next. And probably you all help me. No, I'm telling you already, my targets are very clear. Akola needs to do, then I will go one by one, and we try to do it. Dr. Gajan Singh happily has joined now, and I'll ask him to conclude the whole thing. It was Dr. Gajan Singh for you. Thank you, Syed. Can you hear me? Yes. Yes, sir. Okay, thank you. I'm extremely happy, especially I want to start thanking Dr. Sunil Gorantiwar first. I think as a team leader, you have done a wonderful job. What I saw is most impressive thing is that how scientifically the farmers are doing this agriculture. As a matter of fact, I was so impressed by Rahul Russell work both on grapes and pomegranate, and especially the grape. He is using subsurface drip system. He is using mulch. The pictures are so impressive. I go to California, Napa Valley, which is really a leader in grape production. I haven't seen such beautiful orchards as this farm was. And the kind of things this drip system, underground drip system, which I saw on a Visa farm only, Ludhiana, for rice and wheat crops there. But I think it has a much better scope for the horticultural crops because the plantation is for a number of years, okay, while the cereal crops are only for a season, for a few months. So, and another farmer, I think Dr. Ravindra Nikam, once we get people like him working in agriculture, and I think the agriculture sector has a tremendous future then. And I think that is the future. We have to convince somehow the youngsters, the young agricultural scientists, all that to take agriculture as a business profession, not as a hobby, or not by that you are forced to do, you have nothing else to do because that's what your parents did and you continue. So until unless the agriculture becomes scientific, it'll still be a challenge. And today's presentations are extremely encouraging. I remember Sunil mentioning about it. I did talk to the farmers, and it was very interesting when I did it in Pune that I was speaking in Hindi and some of them were speaking in Marathi. But I can tell you when you talk sense, common sense, we are able to communicate even in different languages. We are able to understand it from the way you express it. And so I'm extremely happy. I think we are making a tremendous progress in the system of presentations, especially bringing the ground level farmers to the forums, and especially the carrot farming from the Sikandrabad in Western UP. And these are ideal examples. Our responsibility as professions is now to use these farmers' fields as a laboratory, as a field laboratory, work with them to move further because they are doing it practically. And if we work with them to solve their problems, improve their productivity, efficiency of the system, economics of the system, I think we'll go a long way. And we are really going in the right direction of bringing everybody onto the same platform. Thank you very much, everybody. Again, Sunil, great job, and also Dr. Patil. Okay. Thank you. Thank you very much. I think I would like to conclude the session with thanks to Honorable Vice Chancellor Dr. P.C. Patil and Gorantiwar and Dr. Narendra Shah
who all tried to make this particular event possible. We have had almost more than 300 viewers from YouTube as well as participants here. Thank you Narendra, very now much. we will be talking about Rahuri also, no? Not only Pantnagar, okay? Sorry, I used the word furish, but it was in positive vibes I wanted to say, because in one webinar you said he's from Pantnagar, I'm from Pantnagar. I started really feeling, shaky, and then TNAU came. So I really... I was offended. So Narendra, but one thing is still common. You are also my student. So, anyway, we still the same thing. Okay. Dr. Sayed, you can try next Pantnagar. Mayande is also Dr. I am also alumni of Pantnagar. Oh my goodness! But then Akola is your heart. I think I want to get Akola first. Then we'll go one by one. I think Maharashtra. I will try to bring in Akola, no problem. Because I'm a Mumbaikar now, so I also for a long time, very long time. So I think we'll start here and we'll bring in. Actually, there are some places like Karnataka is not certain places we'll bring in again. We will do it. Thank you very much again. I think for all of you, I'm very happy to see all of you, and we'll meet every Saturday unless something is there. Every Saturday we have 7:30 to 9. Normally it ends up 9:45, 10 because we chat for almost half an hour with old friends meeting together like this. And I think I don't mind what happens because that is what is the intention of this. It is not just a presentation to the public or to show scientists we are working. It is to bring in the farmers, listening to them, and we also meet each other and we cooperate with ourselves. That is the objective of this whole program, bringing all the engineers to bridge the other technology people. So we bring in agronomists, entomologists, everybody. We actually lay the bridge for them. Thank you very much. Dr. Syed, just one word. At one time, Dr. Syed, with your sermon, I was getting scared because I was admitting people and you said that not more than 90. So, Dr. Patil, please bear on this that, we had such a big participation today and our TNA friend also appreciated it. Sorry. See, last time in the webinar series, I had actually a webinar system where participants and separately is there, panelists. But this time response is not much. So I had only 100 and YouTube is there. Why 90? I told, now suppose you lost your connection, you have to come back again. I know. That is the reason. That is the reason. Right. Sorry for it. I think no, it's very good. Because more than 50, 60, you cannot manage in a meeting. Actually, I know that I was clicking all the time, and I think I'm my assistant, but difficult to manage it. So better to have in YouTube. We are live from the beginning. So I think we will send again as usual. Each speaker also we make in YouTube separately. So for them to do it, that we have been doing already. So this you will get by tomorrow, by noon. You should get all of this. So we continue doing it. I think I'd like to thank everyone again. Namaskar. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Sir.